We need this fan. Yeah, तुम तो असम के और नॉर्थ ईस्ट के हैं. You get- It's fine. I don't need a chair. Yeah, yeah. Okay. I'll read it. Hmm. Done. How many of you are hungry? How many of you are hungry? Am I audible? भूख कितनों को लगी है? Good. बाकी it's 1:28. भूख लगा है? झूठ लगा है ना? Why did you take time to say yes? Right? She said yes. Why did she say yes? Why did you say no? Reason? You tell me the reason. Good. Okay, I won't take much of your time. Can you just switch off fan for a while? Otherwise, कोई तो आवाज कर रहा है ये या ये वाला आवाज कर रहा है. इस वाला. Can you switch it off? कहाँ से आएगा? AC is working, I guess, right? Let's see for a while, right? So you all, done. Okay. Okay. First of all, my name is I am Lieutenant Colonel Akshay Rajput. I am still serving officer. Araman happens to be my friend, and he requested me to guide you guys on broadly on SSBs, right? So how many of you are going for SSB? One, two. Okay, you are preparing for CTS and all that. How many for NDA? Okay, mostly are from NDA. CTS? We met before, right? No, no. Okay, I have been here once. Okay. What do you think of SSB? What have you heard about SSB till date? Physicality, I would say only 5% of SSB. Even that is not important. Fine. Anything other than that? You are comfortable in English, Hindi, or as much I don't know. I can understand a bit, but yes. Any idea about SSB? कि exactly क्या होता है SSB में? That's okay. SSB क्या सुना है? What happens in SSB? No, that are the attributes of SSB. How they do it? Okay, boys, NDA boys. Any idea? No idea. Then why you want to join army or air force or navy? Obviously, like NDA and CDS. Very some simplest of all questions. Why you want to join army or air force? For my life. What do you mean by that? You are a what? Okay. So what makes you think that in army you will be very happy? Who is- He's very happy. Okay. Okay. The Anshula Twenty is special entry, sir. Fine. Good. So I can see Animul Hassan, Anshula Damri, Debashish Coach, and okay, again, Ramsey. Okay, before I go any further, let me just tell you what happens in SSB day wise, right? On day one, you will report and you will fill up a form which is called PIQ, Personal Information Questionnaire, right?
about yourself, about your schooling, about college, everything, like a biodata. There were two aspects into that. One is hobbies and one is sports. You have to fill out what are your hobbies and what are your sports. Fine. Then on day 2, screening, in which there is one test also. It's a it's aptitude test. You don't have to prepare for that. It's a very generic, extremely generic. और उसके marks कहीं add नहीं होते हैं. Whatever you score in that doesn't matter. Why? वो test सिर्फ इसलिए होता है just to check your basic IQ level. Whether you're falling between a figure of 20 to 120 or something like in between, right? Just to check that, not to assess you, right? Screening, you're given one. You have to make one story, which is based on a photo. What is this test called? Anybody knows that? What is that? Good. This is called PPDT, Picture Perception Description Test. You are shown one photo, right? Look at the photo for 30 seconds. Then you're given 3.5 minutes to write a story on that. You done a story. Then with the story you discuss. Within your group. You will divide it into parts, like you are 150. So they will make group of say 10. Minimum 6, maximum 12, I guess. Right? So then you will come to that room, something like this only. You sit in a semicircle, then discuss among yourselves. I mean, first you speak your story. Yeah, all of you will speak your story. Then you will make common story discussion. Based upon this, the screening is done. So all those who make it through this, they are retained for the following days. Now day 3. What happens in day 3? Psychological test. What are those? Anybody? EAT. What is EAT? What do you mean by this? Good one. Good. Simply means the same thing which has happened over here. PPDT. Please come. Now this PPDT is called over here is thematic apperception test. Right? Don't worry about ki kya hai. I will tell. Don't worry about this. Then WAT, word association test. You are shown a one word for 15 seconds. Look at the word for 15 seconds, and within the 15 seconds, you have to write the sentence on it. Similarly, in TAT, 11 photographs will come. One photograph came on screen. You're sitting like this only. 30 seconds, lights are on. You can see the photograph for 30, observe it. So lights are off, right? You see look at the picture for 30 seconds. Then lights are switched on. Picture goes off. You're given 3.5 minutes. Write a story. It will happen for 11 times. The 12th photograph will be nothing. This is blank. Make a story of your own. Whatever you think, you can write it. Then comes WAT, word association test. Any word. Any word means name any word. Like confidence, like country, love, anything. Make a sentence on it. Right? Those words will come 60, 60, one after one after one. They will flash a word for 15 seconds. Then word will change. You look at it and write it. Look at it and write it. There is no separate timing given for that. That for a time that word is over there, you can make a sentence. Then SRT, that is situation reaction test. Whatever situation is there, one line that your good name is Brijesh. Brijesh is going to school to give his examination. While crossing the road, he found dash 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 dash. So Brijesh nahi hoga. It was something that he was going to his school to give his examination of class 12. While crossing the road, he found dash dash dash. Right? Like what he found a line. A horse was crossing the road
and got hit. Somebody, there was an accident. Two, three conditions were there. He did dash dash dash. Now he did is you. You have to complete that sentence. What he did. Those come 60, right? And you have to start doing it. Getting my point? Now this is day 3. Then comes day 4. Day 4 and day 5. GTO. What is GTO? No idea? Ground task officers. Like there are a number of tasks over here. These are physical tasks. This is all written as of now. First of all, there will be a group discussions. In total, there will be 2. One topic is given, right? You are taken to field area, like and then there will be room. You are made to sit across a circle. One topic is given, and they are made to discuss. 2 topics will come. Officer will give it to you. After that, we will take to ground, and he will do this thing. This is exercise basically. All this activity, and there will be snake race also. Yes, very important. Switch on the fan, I guess. थोड़ा गर्म हो रहा है, right? Okay. Group discussion in totality 2 within the full group. Progressive group task. Again, I told you we will made divided into groups of 10. You are given a task. You have to go from one place A to place B using some wooden logs, right? Some wood pieces, some ropes, one after another. Then half group task. You are divided into 2 parts. A group of 10 will be now made a group of 5. Same kind of task. Do it separately, different locations. Then there will be command task. Like the group of 10, you are made to sit at one place. Person will call you, the officer will call one guy, just number 1 or 2. Like one that comes, he'll show you the obstacle, you have to cross this. Now you can call and he will give you some wooden logs and same thing. You have to cross, you are in command, you will speak. You can call any 2 persons from your group for your help. Any 2. Any 2 means any 2. They will come, they will not say anything. You will make them speak. Okay, do this, do that, do that. Right? This is command task. Then come ninja task. There, that this is a place where your physical abilities are seen. But don't worry, if you are not able to do it, doesn't matter. Right? People are say heavy, lighter. There are some individual obstacles are there. Right? Jumping, this and that. It's very normal thing. Not to worry. Running exercise. Have you seen Bahubali? Have you seen Bahubali? In that case, both the brothers are and within what is the name of the lady? The mother. There's somebody, Rajmata, yes. There's somebody gonna attack them, and they're making a plan that he will come from here, he'll go there, and then what he'll do? Okay, we'll give you this one chariot and this much people like this. What will you do? This is called war gaming. Any exercise, right? Same thing will happen over there. You are given 2, 3 problems, you have to sort it out, right? Discussion and thing like that. Extempore, one topic. There will be 4 topics. Like play card is there. 4 topics are written over there. Choose, take it, take 2, 3 minutes, and then speak. Just like I am speaking in front of you. Then I will sit. The by the time other guy has already picked up his card, he is somewhere else preparing him, and he'll come and speak. Then he'll join. He'll go on and on and on. This is called extempo, just like that in school and colleges. And snake race. Now, since after screening, you already 4, 5 groups would be there. 3 to 4 groups are always there. So you are made to run through obstacles group wise, like one group, 2 group, like this. 3 boys are one group. These 3 were 2 group. You 3 girls are one group, and those two girls are other group. So one snake. Snake is made like a cloth woven across and filled with cotton, like 10 feet long.
Everybody has to carry it in between. You have to run through obstacles, right? They say that he who wins will be the winner, like who comes first. But nobody comes first. Everybody comes at the same time. We ensure that, right? You have to go with a war cry. Choose a war cry. Choose your war cry. Choose a war cry. And while you are doing it, you keep chanting your war cry, like Raja Ramchandra ki Jai, Jai Hind, XYZ. These are part of GTO. And while this is going on, during day 4 and day 5, there will be interview. You would be called individually, right? Officer taking the interview would be of rank of minimum brigadier, minimum, right? He would be interviewing you separately. We will go in your formal dresses and everything. So while these are going on, after you're done, you're called for interviews. Everybody is interviewed. 50 boys or 50, combination of whatever you can interview. This whole process is called what? SSB. Now first comes PIQ form, right? Okay, what I have. Okay, is it 5 was there? Okay, fine. All right. Got it? Need not to note out there. Now tell me how will you prepare for screening? With all. Hmm. Okay, let me ask you a question. Even the people who are looking through online, why should we means the organization, not individually me, take you in army? Or I'm just just assuming that you all want to become an army. Not army, air force, navy, FCAT would have given it. Why? Talking to me. I'm audible to you, but you are not audible to me. Wait, looking for? No, no, no. I'm saying why you want to join army. Simple as that. One line question. Smallest of all questions. Why you want to join army? Anybody can say. Anybody can raise their hand. Say. Hmm. To serve the country. Okay. Vikram has written. क्या इससे obvious और easiest question हो सकता है? Is it possible? What game you play? No, you leave it. You have. I ask you. The guy behind you. Last one. Which game do you play? Football. You play for a school or college? School played. Now in. Okay, you are preparing for NDA, right? Okay. Do you practice in some club or something? No. Or if you happen to watch, see any club over practicing in nearby area, and you want to play with them, be part of the team, won't they ask you why should we take you? Right? Simplest of all questions. Mother of all questions is this only. Why you? What do you have that we should take it? Though SSB process is there, but this question will certainly come in interview. 100%. Let me start with another thing. What do you think is easy to speak on for 1 minute? I give you two options. One is postal life, right? Postal life, or discipline in student life. Other one is India's foreign policy or current affairs. Speak now for 1 minute on postal life. Anybody? You want to try? Try करो.
Yes, hostel life. One is hostel life, and another one is say Russia-Ukraine war, or maybe Assam in next 10-15 years, or Assam so far in last 50 years, right? Which is in which topic you can speak for say 2-3 minutes. Like I am standing here, you are made to stand and speak, right? What do you think? Hmm? I can vouch with the blood. You will not be able to speak for more than 1.5 minutes on hostel life, but you can speak for 1 hour on what Assam can do next 15 years. Try it. Go home, do it. Hostel life, we are good in hostel life. We meet so many friends. We make, I mean, we learn so much from each other. We enjoy blah blah blah. उसके बाद खत्म. There's nothing in that. But when you take a difficult topic, which you think is a difficult, you can speak on it for an hour and hour and hour. Assam, we have so many places. We have hills, we have lakes, we have river, we have floods, we have agriculture background. Use cultural thing, dance, music, food, festivals, progress in last 15 years. IIT is there, AIMS is there. So many things are there. You can speak on and on and on, right? Similarly, the question why you want to join army is the simplest of questions, but they're difficult to answer. Why? Because you don't know, or probably you don't know how to speak it, right? So I will start from this question only. Okay, everything falls around this question. Speak up. Almina Ahmed to protect my nation. Yes, obviously. Okay, at the outset, the starting, and let me be very clear with you all, guys. SSB preparation is not something you read and you note down and cram it. कुछ भी नहीं है. I will not ask you to open your book, even notebook, or write down anything. It's just not required. कुछ याद करना ही नहीं है. It's a test of your subconscious mind, not conscious mind. What is subconscious mind? जो दिमाग आपका अपने आप बॉडी करती है, आप सोचते नहीं हो. जैसे मेरे हाथ में अगर एक यहाँ पे ये गमला है, if I throw it at somebody just like this, कुछ डक करेंगे, right? कुछ हाथ करेंगे, right? कुछ लड़ेंगे और कुछ चलाएंगे. ये रिएक्शन हमने सोचा नहीं है, नेचुरली निकला ना अंदर से. That is the subconscious mind. तो ये उसका टेस्ट हो रहा है. Why? Because in each test you're not given time to think. Just do. So when you do what you are. आपको टाइम सोचने दूंगा तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, राइट? प्रॉब्ली जिसको आप नफरत करते हो उस पर अच्छी बातें लिख सकते हो सोच सोच के, बट अगर टाइम नहीं दूंगा तो बोल दोगे बैड है, राइट? दिस इज द थिंग. सेकेंडली, प्लीज कीप इट इन माइंड, ये एक कोचिंग नहीं है. इट इज जस्ट नॉट कोचिंग. यूट्यूब में आपको 1000 चैनल मिल जाएंगे. देयर वुड बी नंबर ऑफ, मैं देखता हूँ कई बार आता है कि लर्न प्रिपेयर एसएसबी इन 30 days. 6 बुक्स पकड़ा देंगे आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स. लेक्चर ले रहा है खड़े होके. ओनली आई एम नॉट सेइंग कि वो जो बंदा है वो क्रेडिबल नहीं है, बट ट्रस्ट मी, इट इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड. दे आर जस्ट एनकैशिंग दिस थिंग. वेयर पीपल सर्टेनली आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम दे हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस थिंग. तो वो सर्टेनली वो आएंगे, दे मेक मनी, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. ऑनलाइन स्पेशली बात कर रहा हूँ, राइट? फिजिकली सामने होना समझना जरूरी है, बिकॉज आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू थिंक. आपकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग अलग है. टेस्ट कॉमन है, क्वेश्चन कॉमन है, आपका आंसर अलग होगा, उसका अलग होगा. दे विल नॉट बी सेम. 2 + 2 = 4. आप भी 4 लिखोगे, आप भी 4 लिखोगे. जैसे 3 लिखा वो गलत हो गया. लेकिन वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी, आपका आंसर अलग है, आपका आंसर अलग है. दोनों सेट हो सकते हैं, एक हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं. आंसर डिफरेंट होगा उसके बावजूद, राइट? व्हाई इज इट हैपनिंग सो? स्पीक. अनलेस यू डोंट स्पीक, ट्रस्ट मी, स्क्रीनिंग भी नहीं कर पाओगे. स्पीकिंग इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू. यस. व्हाट डू यू चेक? इन सब टेस्ट के पीछे का मतलब क्या है? क्या चेक करना है? देयर आर 15 क्वालिटीज which are called OLQs. What is this? Huh? Yes. Officer like qualities. How many? 15.
The number of, it is assumed that Lord Krishna had 16 qualities. Anybody can have only 16 qualities. The 16th one was a supernatural one, which only God can have. It's a godly thing. 15, everybody has it in different proportion, right? So, but it is a desirable that person should have a balance of things, and something which is lacking, but we need it, we cannot take him, right? 15 qualities, you Google it, you'll find all 15 qualities in different forms in different portals. But to prepare for SSB perspective, I will give you only four. Focus on these four. What are those four? For me, the first one is adaptability. Okay. Then comes organizing ability. Then comes courage. Then comes determination and perseverance. What I mean by adaptability? To adapt. Simplest of examples. I am not from Northeast. I happen to be from J&K. But where I'm serving? Northeast. My troops, my boys, they may be from my J&K, or they may not be. They could be from anybody else. Now, I am assuming, suppose you join army. A guy from Northeast joins army and he happens to join Jat battalion, Jat, like Rajasthan people, right? They are not rice eaters. They believe in roti, right? Chapati eating people. Or you happen to go to join Madras regiment. They are rice plus they are more on the food items which are not as per your cuisine, right? And you are commanding them. You are over them. You are their officer. Would you always want to have food of your own type? Certainly you want, but वो available नहीं है. Why? Available तो है. I mean to say कि वो उनको खाना है. Can you? So how would you command them if you're not liking their food at first place? How would you feel that you are having bihu food? I come and yeah, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता. How would you feel? I mean, I'm your guest, right? ये नहीं यार, ये चावल नहीं खाता यार. अरे ऐसा नहीं, अरे नहीं, ये ऐसा नहीं खाता. या हम ये नहीं खाते. So you would feel awkward a bit. You will नहीं, ये ठीक है, he's a good person, but you know, क्या करें इसको, क्या ला के दें, right? So you cannot gel because your duty is not some. You're not becoming a DC over there. क्या अपना खा के आ रहे हो? You are with them. You're bloody at the ground with them. एक खाना बंदा सब खाते हैं, right? There are Tamil officers who speak Punjabi as good as they speak Tamilians. There are Khalsa Sikh officers who speak Tamilians as good as they speak Punjabi. They learnt it. The Gurkha, non-Gurkha people, person, they speak Gurkhali. Britishers speak Gurkhali. You won't be surprised to know. You would be surprised to know, sorry. They learn Gurkhali. A Britisher speaking Gurkhali as fluently as speaking English because his troops are Gurkhas, the Royal British Army, right? First thing is adaptability. You are used to living in a place like Northeast, bit of humidity, bit of cold, everything mixed. What if I put you in Rajasthan? There's no humidity, dry weather. Or I put in Ladakh, then you have to adapt. Not just adapt, you have to perform. So people are there who are not adaptable. There are many. यार कौन जॉब करेगा गो यार चेन्नई में यार आई हैव टू कम बैक टू गुवाहाटी एज सून एज पॉसिबल कौन जॉब करेगा वहां वो ही वांट रन बैक टू होम एवरी टाइम ही इज नॉट एबल टू अडॉप्ट देन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी to organize things. Simplest example, birthday party at home, right? How would you organize a birthday party of say your sibling? कि कितने गेस्ट आएंगे, कौन कौन आएगा, कितने कहाँ करना है, क्या बजट है, केक कितना बड़ा होगा, खाने के आइटम क्या होंगी, लाइट वाइट ऑल दोस थिंग्स. Who is the best organizer you have seen in your life? Exactly. There's nobody better than your mother. घर में सैलरी अगर 100 रुपीज है तब भी घर बढ़िया चल रहा है, 200 तब भी घर बढ़िया चलेगा, 50 है तब भी घर बढ़िया चलेगा. That is organizing ability. Third is courage, which is a very vast thing. What do you think of courage is? What comes in your mind when talk about courage? No, that is there, but how would you portray it with example?
Like, okay, that's one type. Any other way? You need not to speak in English, right? I'm speaking English because a common language hai. Example. Okay, again, somebody else. Do we have ample preparation schools in Guwahati for say SSB for that matter? You have a aim that I want to join NDA, right? NDA, IMA, OTA, whatever, Air Force Academy, Naval Academy, blah blah blah. Aim hai. How many students are preparing for it or are preparing for it? Pan India into lakhs. How many seats are there? You can count, right? What makes you think you can make it? Is it a hit or try? Or you want to make it? These two things cover that. करना है तो करना है यार, बात ही खत्म हो गई. There's no second option. My plan B is my plan A of something else. I don't go with plan two plans. I go with one plan. मैं डुअल माइंड रहूंगा तो कैसे होगा? अरे ये देख लेते हैं तो ये कर लेंगे, अच्छा नहीं तो वो, नहीं तो ए डायरी एग्जाम दे देंगे, ये वो एग्जाम दे देंगे. वो जो ऐसे टिक टिक करता रहेगा, वो टिक टिक घूमता रहेगा, वो कहीं अटकेगा, अटक जाएगा, नहीं अटकेगा तो चलता रहेगा. तो जिसने बोले भाई ये करना है तो करना है, वो यहाँ तो वहां अटकेगा या उससे बेटर में जाएगा या उससे थोड़ा नीचे होगा, टिक टिक नहीं घूमेगा. गेटिंग माय पॉइंट? Courage is something which is beyond your capability. Simple as anything which is beyond your capability, beyond your resources, but you are determined to do it. Physical courage कब दिखता है? जब courage का मतलब यही है कि when something is against you which is stronger than you. Physically बात नहीं कर रहा हूँ. It could be circumstances also. But do you have the will to do it? Right? Simple example, like I assume you have a little somebody at your home, little cousin, little sister, जो भी है. You yourself are not that strong. Let me assume like this guy. दिखने में me and you are maybe uh, thinner than me, है ना? I'm not saying weaker than me. और ऐसे तीन चार हो जाएं. But if it was saving that little fellow from somebody, मान लो एक bully आ गया, bull around him, around you, वो लगा इसको hit कर सकता है बच्चे को, और आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है ना यार, वो दिख रहा है, वो तो बुल है यार, चार हाथ हैं उसके, मैं तो हूं ही क्या. But would you let him hit that kid? वो क्या है? What is making you believe कि मैं इसको रोक दूंगा? That instinct अंदर से जो क्या आता है वो, what makes you feel so? अरे अगर वो बैठ के चेक करेगा, बोलेगा अरे यार ये इतना 50 किलो का, ये 200 किलो का, ये तो पॉसिबल ही नहीं. But still he fights for it. That is courage. That is one type. Other type I just told you कि मैं probably I am from say Vishwanath Charlie. Maybe I am from a far flung area of Nagaland. Mon district का हूँ मैं. By the way, I have served in almost these areas. वहां का बच्चा बोलता है डॉक्टर बनना है मेरे को, उसके बाद नीट की प्रिपरेशन कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, तो लगा है करना है, मुझे करना है तो करना है. वो यूट्यूब से पढ़ेगा, कुछ भी करेगा वो, उसके अंदर आ गया है. राइट? दैट डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस कि अगर नहीं हुआ तो करना है तो करना है. योर स्टोरीज आर रिवॉल्विंग अराउंड दीज फोर फैक्टर्स, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग राइट डायरेक्शंस. इसके अंदर बहुत कुछ आता है, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, number of things are there. We can't cover it word by word by word. But these four actors, four things can be rope in. You can make a story, you can edit your answers on the words around. You can do it, right? Okay. Now, how many of you are hungry as of now? Good. That comes integrity. हाँ, लगना चाहिए भूख. Good. It's been 30 minutes, right? Okay. So far, so long. Any question from your side? Online wise, more study, more confusion. Less study, less confusion. No study, no confusion. Right? Yes. That question is still hanging around. Why you want to join army? You don't have answer as of now. I knew this.
मुझे मालूम आपके किसी का आंसर नहीं है। सबने वो तो सनी देओल की फिल्म से आ रहा होगा आंसर, या कोई बॉर्डर फिल्म से आ रहा होगा आंसर बना दोगे, अपना कुछ नहीं है इस टाइम। आई एम टेलिंग दिस थिंग, राइट? तो वो कब आएगा जब आपके अंदर वो चीज फील होगी, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज नहीं है, ये छुपी हुई है अंदर ही। अभी कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, वी आर असिमुलेटिंग आंसर्स फ्रॉम हियर एंड देयर। सोर्स गूगल कर रहे हो मेंटली, फिर आंसर तैयारी करके सर को बताना है, राइट? वो मन में चल रहा है ना, योर आईज आर स्पीकिंग ऑल ऑफ दैट। वो जब नहीं चलेगा ना और अपना ही अंदर देखोगे आंसर, तो बनेगा आंसर, लिटरली आंसर बनेगा। आई वांट टू सर्व माय कंट्री, जैसे लिखा है किसी ने कि दिल चाहता है, ओके, टू प्रोटेक्ट माय नेशन, टू सर्व द नेशन। तो यह जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, पुलिस पुलिस सर्व नेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो तो कर रहे हैं ना। जो बाहर बिजनेस कर रहा है, या स्टार्ट शार्ट टैंक देखा है, शार्क टैंक आता है, जैसे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना वो, दे फीडिंग पीपल, एम्प्लॉइंग पीपल, गिविंग एम्प्लॉयमेंट, वो तो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो फिर वेग हो गया ना, राइट? डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, जस्ट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस करो जो मैं हूं, मैं ये हूं, मुझे लगेगा पता, हाँ ये मेरे को चाहिए टीम में। मैं इम्प्रेस करने लगूंगा तो ये झूठ बोल रहा है, राइट? ओके, so far so long, any question? The formula still stands: more study, more confusion. Less study, less confusion. No study. My mechanics lecture used to say this thing. Lecture sir ने पढ़ाया पूरा, उसके बाद पूछा नहीं क्वेश्चन, सर नो, I knew, right? Okay, let's start with the first thing, PPDT. Everybody look behind. There's a photograph over there. There's a poster, right? Look for there 30 seconds. I'm counting 30 seconds. Hmm. Last 10 seconds. Chalo. Now you won't look back, right? You have 3.5 minutes. Make a story, right? I'm giving you 3.5 minutes to think. Okay? All those who are online, if you have been to this place, there's a poster behind the class where three fighter pilots are there and one fighter plane is there. Once you happen to be in the class, you can see that. Don't worry, I will explain it to you how you write a story. You not to write, लिखो मत, सोच लो मन में मोटा मोटा, right? Anybody any idea who can speak or start or anything? See, first of all, I told you ना, don't try to impress, try to just express. जो मन में आता है बोलो, correction करना मेरा काम है, right? बोलोगे नहीं तो, पूछोगे नहीं तो डैश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? झिंगा लाला, राइट? चलो, गुड गुड, ग्रेट, ओके, ठीक है ठीक है, आई गॉट योर आइडिया। ओके, एनीबडी एल्स? अच्छा, ओके, वो तो क्रक्स हो गया ना आपकी कहानी का। कहानी क्या है? बाय द वे, आई नो दिस गर्ल, लेफ्ट मोस्ट, शी हैपेंस टू बी द रियल सिस्टर ऑफ माय कोर्समेट। her name is squad leader Avni Chaturvedi. She's from Rewa, MP. जब ये फर्स्ट पैरेड बनी थी तो he told us, my friend. चलो बताओ, कितना सिंपल स्टोरी है यार, कितना सिंपल फोटोग्राफ है, 30 सेकंड घूरा भी है उसको अच्छे से। नाउ 3.5 minutes। प्लीज बोलो, डोंट वरी, स्पीक आउट।
Yeah, please tell. Working hard throughout him. Okay. Story ends. Hmm. What is the sacrifice? How do you know that? How would I know who is reading it? How do you know that? How do you know that? Something difficult for me doesn't mean it's difficult for him. Yeah, you two girls. देखो भूख हम सबको बराबर लगी है. You came here within the city. I came from 3 hours drive, right? But वो perseverance, the hunger is there. I want to go fast. It depends upon how you react. अगर आप सिर्फ सुनोगे कि एक मोनोलॉग चलेगा तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा. You forget everything. It is always two way. जैसे आपने बोला ना, feeling good about it कि बोला मैंने कुछ, right? This is important. बोलना जरूरी है. Yeah, you tell me. हिंदी में बोलो यार, don't worry. Okay, ठीक है. Yeah, of course you, yeah. चलो, let it. No, even for online guys, I am drawing a picture, doesn't make a story. ठीक है? Fair enough? They are not able to. Okay. ये फोटो सबने बचपन में बनाई होगी अपने घर में. है ना? कुछ भी नहीं है. तो कोई है ही नहीं, तीन इंसान ही नहीं है इसके अंदर. सुनाओ. Can do anything about it. It is called TAT, thematic perception test. Means what you are seeing, what you can associate it with, write that. You need not describe the photograph. इसको देख के मन में क्या ख्याल आ रहा है वो लिखना है आपने. आपको क्या स्टोरी बन सकती है. गुड. ये सिंपलेस्ट ऑफ फोटोग्राफ आई गेस. तीन पहाड़ हैं. There's one sun, few birds are there, and few houses here and there, and in between there's a river. Okay. Okay. Hmm. What do they do? Okay. Okay. Safeguard their village from the flooding water. Okay.
But they were enjoying. They believe there is no development out here. It should be more developed, better roads, schools, and all that. Okay. Yes, you do. Don't speak anything. Hindi bolo. Doesn't matter. Just speak. Okay. Animal is saying the river flows from the mountain goat. Once upon a time, there was a village with hills area. Many people lived here. There was a river also. Okay. Fine. Okay. Flying. Fishes are there. Okay. Okay. Flood. Enjoying. Enjoying. Development required. Okay. Yes. Vikram Ghosh, base camp. Okay. Postal life. Simplest of picture, but difficult to make a story. Hostel life. I call it hostel life. This phenomenon I call hostel life. यहीं लड़की बैठी होती है, कुछ चाय पी रहा होता है. You can number of things. कुछ नहीं है करेक्टर यहाँ पे. Just एक ये सबके घर में फोटो होगी कहीं ना कहीं देखी होगी. This is the basic of scenery, right? Speak. I told you ना. Don't worry कि सही गलत. Just speak. I have not qualified your story as of now. Did I? जो है ठीक है बोल दिया. I not say कि गलत सही नहीं. ठीक है. I need to know. बताओ. So once she carried, once in the army were camping near the river, so okay, then she carried request to CEO to organize camp at the area so that his desire and practical comes out. Okay, good. Anshula Diamond, very good. Good try, good attempt. अब उसको एनसीसी कैंप दिख रहा है यहाँ पे. बेस कैंप दिया और बोल रहा है कैंप बनाओ जो मैंने सीखा मुझे करना है. इसको नहीं पेड़ पौधे दिख रहे, इसको नहीं फ्लड दिख रहा, इसको नहीं डेवलपमेंट की बात करनी. राइट. गुड अंशुला, गुड. ऐसा नहीं कि आपकी स्टोरी गलत है. I'm not saying this person's story is better than yours. No, I'm not qualifying it. I'm just saying उसका thought process देखो. इसी रूम में 3 थॉट अलग आ गए, ये अलग आ गया. वहां पे कितने होंगे? 150 प्लस मिनिमम 150. 10 बैठे होंगे. You people are decide जो आराम से बैठे हो वहां ऐसा नहीं बैठेंगे वो. They will overpower you. They try. They think they're overpowering you. That's also stupidity, right? Last 4 not speaking at all. कुछ तो बोलो यार. इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? Say something. या आप बताओ. Your good name is विशाल सांगे. Okay. बोलो तो सही कुछ. देखो यार. Now what she said, I can do the corrections. कि ये गलत है, ऐसे करना चाहिए. What they said, I can do corrections. If you don't speak, I don't know what is going on in your mind. आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? And I just told you, SSB is all about your subconscious mind. If I don't know what is happening in your mind, I can't tell you. You can't prepare, right? You want to attempt? Yeah. Okay. 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 Fine. Fine. You remember I asked you, and I have been asking you why you want to join army. Trust me, for 99.9% people, it's just an option.
It's just an option, one of the option, one of the easiest exam to give. यूपीएससी फॉर्म भरो, एग्जाम दो, रिटर्न क्लियर हो गया, एसएसबी पहुंच गए, just like that. Unlike UPSC mains, we have to do preparations for a lot of time. प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस की तैयारी करो, फिर इंटरव्यू की तैयारी करो, फिर जाके आगे पहुंचता है, लॉट ऑफ वर्क इज देयर, सबसे कम काम इसमें लगता है. देन सीएपीएफ विल गिव, एफकैट देंगे, सीएपीएफ भी देंगे, ये भी देंगे, जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस. Because this is the option, that's why you're not able to think. Now one person found NCC because this person must be from NCC background. उसको दिखा है तो वहाँ एक डायरेक्शन में चल पड़ा वो. He wrote, I don't know, Ansula Damari. Is it a boy or a girl? No idea. Even I don't have idea. Nevertheless, the point is कि direction में चल रहा है ना. If you're not able to think, means you have no direction in mind. If I ask you what do you want to become in life, just simple as that. Let's forget about army. What do you want to become in your life? Give me two options. Chalo, let it be three. Though there should be one only, but give me two options. Chalo, बताओ. Yeah, see, अब ये तो simple question हो गया ना. Okay, Bikram, good time. I read your answer. Returning home, and they all decided to start an NGO to save the nature. Okay, fine, good time. I ask you a very open question. What do you want to become in life? Okay, तो चलो I'm assuming it. Let it be. बाकी, how many of you said a defense officer? Even now, army officer. अभी भी कितनों ने बोला? आप में से ही कितनों ने बोला? ये बताओ मुझे. None. Yes or no? And you proved me my point right now itself, isn't it? See, because it is all on your faces. If I want to become somebody, suppose if I want to become a IAS officer, और मेरे को कोई IAS officer मिलने आता, I'm not talking myself. I'm saying कि कोई मेरे को मिले इंटरेक्शन करने का, मेरे पास कितने सवाल होंगे पूछने को. हाउ डिड यू स्टडी, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कहाँ से मटेरियल लिया सर, मुझे कैसे करना चाहिए, मैं इसमें स्ट्रॉन्ग हूँ, कितने सवाल होंगे मेरे पास. हाँ या ना? आप कितने सवाल हैं इस चीज को लेकर अभी तक? मैंने पैटर्न बताया. कितने के मन में सवाल आए हैं अब तक? एक भी सवाल नहीं आया अभी तक. आई एम स्टिल पुशिंग यू गाइस टू स्पीक अप, यू नॉट स्टिल स्पीकिंग. आई शोड ए फोटोग्राफ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें तीन लड़कियां पार पर दिख रही हैं, पीछे एयरक्राफ्ट खड़ा है, यूनिफॉर्म में खड़ी हैं. 1000 स्टोरी बन सकती हैं इस पे. कैडेट डिफेंस एस्पिरेंट किड्स, वो ऐसे भी इसमें वर्ल्ड वार 1 से लेके 2 3 लड़कियों की वॉर और क्या क्या नहीं बना देंगे भाई. वर यू एबल टू मेक इट? जबकि इतनी डिफाइनिंग फोटो है, साफ दिख रहा है कि एयरफोर्स ऑफिसर ही हैं. देयर इज नो डाउट ऑफ एम्बिग्युइटी कि ये इंडियन एयरलाइंस की पायलट हैं या फोटो शूट के लिए आई हैं. देयर नंबर ऑफ थिंग्स. सी इंस्टेड योरसेल्फ फर्स्ट. SSB preparation or any preparation will not help you unless until you are mentally involved in doing it. You don't have questions about it, right? Now, okay, let me just speak about it now for a while. फोटोग्राफ देखा है, उसका एक बैकग्राउंड, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस फॉर्म में लिखना होता है, सोचना होता है, राइट? इस फोटोग्राफ में पेड़ है, सीन है, पानी दिखा तो क्या मन में आया आपके? एंड फ्लड. जब फ्लड आएगा मतलब आपने प्रॉब्लम क्रिएट की उसमें. जब आपने प्रॉब्लम क्रिएट की तो आपने सोल्यूशन भी ढूंढ लिया. यू वांट टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, सो यू क्रिएट अ प्रॉब्लम. ही फाउंड नथिंग, सब ठीक है. मे बी यू आर फ्रॉम विच प्लेस? ही फ्रॉम हिली एरिया, उसको पता है लोग चिल है, गुड प्लेस, गुड वेदर, लिविंग लाइफ. बट वहां पे डेवलपमेंट कम है, रोड्स ठीक नहीं होंगी, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन ठीक नहीं होगी, स्कूल इतने अच्छे नहीं होंगे. यही दिखा ना. तो जो मन में है लिख दिया, क्योंकि उसको देखे से लेट गया, ही कुड स्पीक इट. तो हमेशा थोड़ी इसमें तो डाल दी कि डेवलपमेंट नहीं है. ही फाउंड कि ठीक है, लाइफ इज स्टिल हियर. यू आर फ्रॉम विच प्लेस? योर फादर डज व्हाट? सी, अब इसका बैकग्राउंड में ऑलरेडी कंफर्ट है. आई एम नॉट सेइंग कि थोड़ा कंफर्ट है ना, कह रहा सब चिल है सर, बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है, अपना वो रह रहे हैं, वहां रह रहे हैं, लाइफ मस्त है, राइट? इट शोज द बैकग्राउंड. सी, अभी आंसर दिख गया ना, इसके आंसर में इसका बैकग्राउंड था, उसने उसको वो रिलेट किया. दिस इज सबकॉन्शियस माइंड स्पीकिंग. दैट इज सबकॉन्शियस माइंड स्पीकिंग. आपने वो देखा उससे को, यू वुड हैव गिवन हिंट्स फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल अराउंड.
एसएसबी में ये होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, तो उसके माइंड में चला चला आपने खिचड़ी बनाई और इसमें फ्लड लाया। यस और नो? सिंपल एज दैट। तो सबकॉन्शियस माइंड का ही टेस्ट है सारा ये। गेटिंग माय पॉइंट? अब इस फोटो में अगर इस अभी somebody said कि इसमें बेस कैंप है एनसीसी का, उसने किया होगा या सुना होगा या करना होगा, उसको वही दिखा, he put this, right? Now this person is Vikram Ghosh. Now he is saying that pure nature, this group of people have gone to this area and they established a camp, and then to protect the environment after running home, they also had to start an NGO to save the nature and protect it. मतलब कुछ लोग गए हैं, एंजॉय किया, उनको लगा ये इतना अच्छा एनवायरमेंट है, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो विल फॉर्म ए एनजीओ टू सेव इट। ये अलग स्कूल ऑफ थॉट हो गया। एक एनजीओ क्रिएट कर रहा है एनवायरमेंट बचाने के लिए, एक एनवायरमेंट में एंजॉय कर रहा है, एक एनवायरमेंट एंजॉयमेंट दिख रही है, एक को फ्लड दिख रहा है। आपके मन में कुछ और चल रहा होगा, नथिंग। यू वांट टू गो होम, हैव अ गुड टाइम विद फैमिली, आपको फैमिली याद आ रही है, यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस? सही। आपको उसमें वो दिख रहा है कि चिलैक्स है, यहाँ थोड़ी भगदड़ है, मौसम खराब है, गर्मी होता है, पीपल नॉट दैट हेल्पिंग ईच अदर, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको वो दिखा उसमें। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जो सिंपलेस्ट फोटो है वो आपका सब निकाल देती है बाहर। जब स्टोरी बनानी है उसमें प्रॉब्लम नहीं डालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट पुट ए जबरदस्ती का प्रॉब्लम। पानी मैंने जानबूझ के बनाया था इसमें, ये फ्लड आएगा, ब्रह्मपुत्र है, यहाँ तो फ्लड आता रहता है, पहली चीज यही लिखता है इंसान, फ्लड आ गया, फिर राजू आया, जंप किया, लोगों को बचा लिया, सब कर लिया उसने। होता है कि नहीं होता है? सिंपल है। अभी आई कैन 100% वाउच इट। इसके मन में यही चल रहा होगा दो के मन में कि कोई डूब रहा था, उसको बचा लिया टाइप। इसको डुबो तो बचाने दोगे, वो नहीं करना है। डू नॉट क्रिएट सच सीन्स अननेसेसरीली। अगर आप एंजॉयमेंट बोल रहे हो तो यू कैन नॉट पुट की कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट बताओ ना कैसे नहीं है, शो इट। डू नॉट यूज वर्ड लाइक हार्ड वर्किंग, राइट, सिंसियर, डोसाइल। अगर मैं लिख ही रहा हूं कि वो हार्ड वर्किंग है, डोसाइल है ना, उसकी तारीफ कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग इन द माइंड ऑफ द रीडर कि ये अच्छा इंसान है, फिर करके दिखा दो ना उसका अच्छा इंसान काम। गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं करना होता। कैरेक्टर्स डिफाइन करो उसमें। फर्स्ट लगे 3 लड़कियां थी, हार्ड वर्क किया, यू सेड उन्होंने क्या हार्ड वर्क किया? व्हाट डू मीन बाय हार्ड वर्क? तो आपने अपने एक बेसिकली 3 लाइन में डिफाइन कर दिया कि फोटोग्राफ ये है। इट्स लाइक कैन पुट दिस लाइन अंडरनीथ दैट फोटोग्राफ एंड पेस्ट इट, हार्ड वर्क विंस। नो, व्हाट आर थ्री गर्ल्स, नाम क्या है उनका, कौन थी? स्टोरी बनानी है ना आपको। इमेजिन दीज आर कवर पेज ऑफ योर बुक, वो इन 3 की स्टोरी अंदर खुलेगी ना, फिर क्या है, हु आर दिस 3 गर्ल्स, whether they are 3 girls are only or not, somebody में से ही नहीं, ये तो बॉय है, 2 लड़कियां हैं, एक का बन नहीं दिख रहा, यू कैन सी राइट मोस्ट, नहीं दिख रहा ना, मुझे लड़का दिखा वो। कुड बी, कुड बी, कुड नॉट बी, बिकॉज एसएसबी में इतनी क्लियर फोटो नहीं आती है, स्ट्रच आता है, तो चांसेस आर देयर, यू विल अज्यूम थिंग्स, यू एंड यू फाइंड कि मेरे को तो 3 लड़के ही हैं यार, लेकिन नहीं भाई 2 लड़के हैं, एक लड़की है, तो ये होगा, इट हैपेंस, राइट? नाउ वी कैन डेवलप ऑन लेटर ऑन, बट बेसिक रक्षा की तारीफ मत करना। गुड वर्क, शुड वर्क, सिंसियर, हॉनेस्ट नहीं लिखना है, जबरदस्ती प्रॉब्लम नहीं डालनी है, राइट? पानी दिखा है तो गुड वाटर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स हो रही है, राफ्टिंग करके आ रहे हैं, ये कैंप बने हैं 2, दे गॉन अप द हिल एंड दे आर कमिंग राफ्टिंग, दिस आई एम टेकिंग द बेसलाइन, since we I cannot dwell much on that time as of now, getting a crux, पॉजिटिविटी आ गई ना उसमें। गांव में बोला डेवलपमेंट नहीं तो हम करेंगे डेवलपमेंट खुद यार, हम कैंप बनाएंगे, हम इनवाइट करेंगे, ऑनलाइन लड़के ने बनाया वेबसाइट, स्टूडेंट ट्रैवल का बनाया, उसने कैंपिंग लड़कों को आती थी करना, उन्होंने एडवर्टाइज किया, आया, डेवलपमेंट हुई, एंजॉय करो, ऐसे एंजॉय करा दो। यस, नहीं डालना है, नेगेटिव बना रहे हो, है कहाँ इसमें नेगेटिव? यू आर पुटिंग नेगेटिविटी इनटू, नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें कहीं, राइट? दैट्स वन थिंग। नाउ सिंपल सा एक्सरसाइज, I'll give you words, you have to give me the make sentences of it. This is called WAT, word association test. Do not think much. It is of how many time, how much time does it take for one word? 15 seconds. 1 5. Okay. Word I'm giving, dark. You can speak your answer.
ओके, डार्क मैटर की बात कर रहे हो। ओके ओके ओके, 50 सेकंड्स, रादर 35 सेकंड्स हो चुके हैं। अब तक दूसरा वर्ड आ चुका होगा और तीसरा भी आ चुका होगा। Dark is the meaning of light. Okay, it is always necessary to make a hero in PPT. No, Vikram, not required. No heroism is required in PPT. It is a very generic thing. I'm just okay. I'm sorry. I'm talking to Vikram. Vikram, the thing is, you don't have to make a heroic thing. Sunny Deol, Salman Khan, Shah Rukh Khan nahi banana hai. A very normal thing. Central character could be there. Be caution at night walk. Okay. Be cautious at night walk. Okay. Dark. The the room is very dark. Okay. Hmm. You just say, don't worry. मैं बता दूंगा क्या है. जो बोलना है बोलो. The car is in the color. Okay. Any random car. It's very dark at night. Okay. Online guys, please try again for dark. Those who have tried again, try again. No worry. Try with dark color. Okay. You like dark pencils? Okay. The of this man is dark. Life is not good. Garib hai. Right? Okay. You have phobia of darkness. Okay. कुछ तो बोलो श्रीमान. You two girls not speaking up at all. Hmm. You want to try again? Try again. Don't worry. Keep saying. Life. Okay. You like dark chocolate. Okay. जो आपने ज्ञान दिया है, life starts from dark, this tripod is dark, the life of that man is dark. You said something also. What? Very dark is outside, night is dark at night. इसमें कौन सी क्वालिटी नजर आ रही है मेरे को आपकी उन चारों में से? करेज, अडेप्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, ऑर्गेनाइजेबिलिटी, कौन सी दिख पा रहा हूँ मैं? आई एम एबल टू सी एनीथिंग? तो ये क्यों पूछा है मैंने फिर ये? आपकी हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान जानने के लिए? आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं जानने के लिए? व्हाट इफ आई राइट दिस? बेस्ट टाइम. मैंने क्या लिखा है? क्या दिख रहा है ऐसे मेरे मेंटालिटी का? आप आर्मी अफसर बनने आ रहे हो और पहले तो आप कवियों वाला ज्ञान दे रहे हो. अंधकार के आगे जिंदगी है टाइप्स. देयर इज अ लाइट आफ्टर डार्क. डार्क फोबिया. यू तो बता ही रहे हो, मतलब फोबिया डार्कनेस का. आई वांट टू ज्वाइन फोर्सेस. राइट? कितने वर्ड लिखे हैं मैंने? 1 2 3. इफ आई अज्यूम, हाउ मच टाइम आई हैव एंड हाउ मच टाइम डू यू need to write? Maybe not 1 to at least 5 6 seconds you need. Right? You have to write, bro. Yes, 15 seconds for one. If I start doing stopwatch ले लूं अगर मैं हाथ में and I give you words and then click and then click and then click, first word will go. वो रहेगा नहीं वहां. You cannot come back. well last word जैसे click होता खत्म, बंद, finish, paper down. You can't write it. आपका जो शीट है हाथ में, इसमें उसमें दूसरे कॉलम बने होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक 1 2 3 भी लिखा है. आपने पहला देखा 1 का आंसर लिखो, 2 का आंसर लिखो, और लाइन मिस कर दी. आपने यहाँ लिख दिया आंसर, ये जो यहाँ लिखा आंसर, ये आपने सॉरी, ये आपने आंसर लिख दिया 4 का. राइट? जो आंसर लिखा ये 4 का, तो 3 कहाँ गया?
तो जो आपका आंसर 4 का था, विल अज्यूम इज आंसर फॉर थर्ड वर्ड। सब पैटर्न बिगड़ जाएगा। एक वर्ड का देखा लिखना, देखा लिखना। कैन यू प्रिपेयर फॉर दिस थिंग बाय लर्निंग थ्रू बुक्स, तो यूट्यूब? ट्रस्ट मी, नो बडी इन द वर्ल्ड कैन डू इट। मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ, देखा है मैंने कुछ फनी, दे डोंट नो। ठीक है, ये वर्ड समझ में आया? एंगर। कौन इज बैड? ओके, you have a okay, fine, I can understand what you're trying to say. Okay, you don't have to use the word, let me be very clear about it. You can use, you may not use. Who upset? Angry? Why can't you be happy? Okay, yes, quickly, because I have to, teach you a few more things also, फटाफट। अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट ब्रीफिंग को कैसा आता है और आदमी क्या लिखता है और क्या अज्यूम किया जाता है, राइट? एंगर, गुस्सा यार, इससे सिंपल वर्ड क्या हो सकता है लाइफ में? हॉस्टल लाइफ, इट्स हॉस्टल लाइफ। वी कैन गो शो इट योर एनिमी। ओके, गुस्सा क्यों दिखाना, उसको तो पीट देंगे यार, दिखाएंगे थोड़ी। चलो, गुड गुड ट्रैक विक्रम, गुड, यू आर रिस्पॉन्डिंग वेल, गुड। सर्व कंट्री विदाउट डार्क थिंग, अंशुला। ओके, गुड टाइम, यू गाइस आर रिस्पॉन्डिंग गुड। नेवर टेक एनी डिसीजन आउट ऑफ एंगर। ओके, फाइन। ओके, okay, so I assume anger is a wrong thing. You by this you all mean this only? Before I write my answer, I just assuming this thing. I don't believe so. Speak na, give me the answer. Write that. You said anger leads to impulsive decisions. So you said this, right? I don't think so. It's best way to, exactly, good answer. Best way to defend myself. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक इमोशन इमोट किया था कि घर में छोटा बच्चा है और आप वीक हो और कोई बुल मारने आ रहा है, तो आप क्या करते हो? You'll fight the bull. You will stand in front, in between bull and the kid, or something like that, right? No, out of love, for the kid, because your responsibility भी है. You love your that kid because responsibility भी है, कर रहे हो. Similarly, कि मैं किसी को बोल दिया तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो दफा जाए यहाँ से. It's not beyond. It's beyond your reach. It's your beyond your capability. If I say, yeah, आपके बस का नहीं है इसको clear करना, how should you react to it? गुस्सा आना चाहिए या मान लेना चाहिए? वो क्या होगा वो? How you should feel? Humiliated. Humiliation leads to गुस्सा. गुस्से को फिर आपने क्या किया? That matters. गुस्सा खराब नहीं है। गुस्से के बाद आपने अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगाया, चैनलाइज किया कि करना ही करना है, या उसको पीटने चल पड़े? I'm not, you're not getting my point. Like it's like I say now कि भाई this class cannot kill SSB. You cannot kill SSB. That means the point. ऐसा नहीं बोला, just for exam saying that yeah, you cannot kill SSB. It's no point leaving. Leave it. How would you feel about it? यहाँ तो रोओगे, ह्यूमिलेट फील करोगे, या मुंह गुस्सा बनाते चले जाओगे। अब उसका जो इमोशन, अगर इसको गुस्सा आया, जो मुझे जो रो पड़ा, वो तो सिंपैथी मांग रहा है, ले की बॉडी मांग रही है सिंपैथी, somebody to encourage him.
उसको गुस्सा आया, अब उसने गुस्से के बाद क्या किया, उसको एंगर मीन्स कि उसकी कैपेबिलिटी पे उसको शक किया गया। नाउ हाउ ही चैनलाइज दैट एनर्जी डिटरमाइंस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्या वो पढ़ेगा कि मैं जवाब दूंगा उसको, मैं करके दिखाऊंगा उसको। मैं तो एग्जांपल देता हूँ, यहीं का प्लेयर है रियान पराग, नाम सुना है? नाउ इज कैप्टन ऑफ राजस्थान रॉयल्स। हाउ मेनी एसएमएस प्लेयर्स आर देयर इन इंडियन टीम? उसको भी इंटरमाइन किया गया था, बट चैनलाइज करता रहा ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? एंगर इज ऑलवेज गुड प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू चैनलाइज इट। इफ यू डोंट नो, गुस्सा आ गया ऐसे और तो खाना किसी ने पटक दिया, दैट इज स्टूपिड, इट इज नॉट एंगर। मैं एंगर को ऐसे देखता हूँ, राइट? स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि गुस्सा जब आता है तो इंसान भूल जाता है कि उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी मेंटल कितनी है। उसको एक टारगेट दिखता है, मुझे ये करना है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वर्ड देता हूं मैं आपको, सिंपल ऑफ दैट, वन मोर वर्ड, लास्ट वर्ड फ्रॉम माय साइड, वेरी लास्ट वर्ड, ठीक है? सिंपलेस्ट ऑफ पोस्टल लाइफ, इंडिया। ये वर्ड कभी नहीं आएगा एसएसबी में, आई कैन अश्योर यू। इंडिया। ओके, ओके, ओके। ईगो greater than anger, do to protect, never take and see, not okay. India, country first, okay. Our home, okay. नहीं चल रहा ना दिमाग, तो सिंपल वर्ड है इंडिया, लेकिन आंसर नहीं बन पा रहा। ओके, पहले पिक ए वर्ड फ्रॉम दिस रूम, राइट? दिस रूम। I call such words dead words. These words are good for practice. Chair will not come over there. It's a dead word. इसका क्या इमोशन है चेयर का? चेयर है ना, एंगर तो इमोशन था ना। चेयर, वेरी गुड इन्वेंशन। चलो ठीक है। We can, you can break the chair, okay, easily. Okay, okay, good. Hmm? I'll want to eat. Okay, okay. Say loudly. Learn. Okay. Hmm. Chair means you are thinking about designation, some appointment, some position. ठीक है. You're defining chair. Does it help you in preparing? Preparations. Preparation में चल रही है. Table chair आता है ना हाथ में. Why can't you use that emotion? Chair, chairman बन जाओगे, DC बन जाओगे, जनरल साहब बन जाओगे, CM बन जाओगे. That's chair. How you see as chair? It helps me in what? Doing what? In preparations. आप उसको मुझे क्या बताने की कोशिश कर सकते हो उससे कि आप क्या सोचते हो चीज को देखे? चेयर मीन्स प्रिपरेशन। हु प्रिपेयर्स, हु ट्रेन्स, हु हैज समथिंग इन एम, ये कुछ करना है, तो योर पर्सनालिटी कम्स आउट। द साइकोलॉजिस्ट नेवर सीज यू टेक द टेस्ट। वो वहां नहीं बैठे होते हैं या समवेयर एल्स, उनके पास जाता है, वो पढ़ते हैं, दे मेक ए पिक्चर ऑफ यू, सीइंग यू थ्रू द आंसर्स। गेटिंग अ पॉइंट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now last part before I leave you guys,
is group discussion. You are from Meghalaya, right? You are from Arunachal. You are from Arunachal. You are from Assam. Assam. Manipur. Okay. Manipur. You are from Assam only. Meghalaya. Okay. And you are from Assam. Manipur. So we have almost all northern states. Almost. Meghalaya we have, Manipur we have, Arunachal we have, Assam we have. And anything I missed? Mizoram. Meghalaya. Mizoram का कोई नहीं है, right? I it's an open question. Which state is the best in Northeast? He said Meghalaya, you said Assam. Why? Answer them, not me. मैं तो नहीं, don't answer. I have opened thrown a question. Discussion between among you all guys. You, yeah, you have discussed it. Who is the best? Why? You can cut her through. जो बात करते हैं आप काट सकते हो बीच में. जरूरी नहीं है कि सुनना है पूरा. Tam. Okay, Meghalaya, Manipur, guys, nothing. No counter. It's a discussion thing, not a one is speaking, other is listening to it. It's not like that. You can disagree with him, you can cut with him, right? West states, Arunachal and all, where are they? No Meghalaya, nothing. No representation from Assam. That's gateway or khatam. Look at her and speak. She is speaking from Meghalaya, not me. Look at her and speak. No. I am moderator. You have to look at each other. Hmm. Rest of the guys have no opinion, nothing.
Hmm. Hmm. SMEs. He is making a statement. Uh, Okay, let me put the another question. Which is the worst state among these four states in Northeast? Assam, Meghalaya, Manipur, Arunachal. Right? यही चार है ना अभी यहाँ पे nobody else. Which is the worst one of these four in Northeast? Which is the worst state? I am question is simple. You don't want to participate. Which state has the physically weakest people? Assam, Meghalaya, Manipur, or what is the third? Arunachal. Physically weakest of all. Men, women, everything. I'm saying among all four of you guys. No, no, physically weakest. Look at don't know the state. I'm saying the physically weakest men, women are from which state among these four? Manipur, Arunachal. All have equally. मतलब अगर पंजा लड़ाएंगे तो कोई हारेगा ही नहीं. कैसे? अभी तो बोला सब बराबर है. वही तो पूछ रहा हूँ ना. Who think? Who think that his state people are stronger than other state people? Generally, obviously, realistically. Arunachal guy is speaking for Assam, and Assam is not speaking for themselves. So Assam is weakest, right? Which state has the most intelligent people? Manipur, Meghalaya, Assam, most intelligent people. IQ level, intelligent. Assam, Meghalaya, Manipur. Mizoram. Anybody from Mizoram? No, no, cut the Mizoram. We're talking about these four states. Assam, Arunachal, Manipur, and Meghalaya. Some people are the most intelligent people. Everybody else believe in that. All believe in that. Arunachal boys.
Manipur. So you won't speak for Arunachal. How do you know that? How do you know that? Did anyone of us speak about Lachit Burfa Khan? Did you name the take the name? आपके आर्गुमेंट का सबसे हैवी वर्ड तो वही था, like this one boy has Vikram has used this, right? None of you give an example. Have you noticed it? All assumptions. How am I? If you argue with somebody without an example, without a fact, would he take it? Would he believe in that? Universal fact कुछ नहीं था. None of you said anything. Assam पहला question था which is the best state. Assam हमें से कुछ भी है. Give me examples. She opened the open statement कि it's a gateway of Northeast. How? Prove it. What's so great in Assam which is not in the rest of the states? IIT, IIM, not IIM. IIM is in Shillong. IIT is here. AIMS is here. Right? Waterways are coming up. Did you speak anything like that? Nothing. Shillong, IIM is there. People across the world come over there. They are producing best of the minds, training best of the mind over there. AQI level is so less over there and so good over there for anybody happen to live over there. People from all the communities live over there, right? Muslim, Hindu, Sikh, everybody is there. You have same market. You can have beef, you can have pork, you can have chicken. Everything is there. No fight is happening over there on these grounds. Did you say that? Nothing. Arunachal Pradesh, right? The easternmost part of the sun rises from Arunachal. So India starts rising from Arunachal. We are the gem which is yet to be polished. Yes, as of now, we don't have IIT, I am this and that. But we are growing like this. We are the first wall against China. We are fighting our battle in our own self. Do you say like that? Then आप तो उल्टा बोल रहे हो. असम वाले strong हैं, वो बोडो strong हैं. If I say, suppose I am Indian, you are say British, you are USA, you are UK, Scottish and blah blah blah. वहां बोलते which country is good and bad? Should I give up? Fighting is a dude. जीत हार तो पंजा लड़ने के बाद चलेगी ना पता. जब तक लड़ाई नहीं हुई तो कैसे मान लूं वो जीत गया? How do you know that? If you prefer fighting, ये वही बात होगी अगर आप दो हो और वो पीस आ गए. आपको यहाँ स्टैंड रखना है अपना. You don't want to leave it. This is your responsibility. Would you leave it? मैं तो हार ही जाऊंगा. Then you want to join the forces. You want to join the forces with this mindset, right? ये इस एक्सरसाइज का पर्पस यही था. When you speak with the facts and figures. Whatever fact and figure you have, this should come out first from your mouth. Then story. Like example देता हूँ आपको मैं. Who is the best actor in India? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, or you whatever you feel. You can start a sentence by saying, as per my view, among the all good actors in India, the best actor is शाहरुख खान. तो बात मैंने शाहरुख खान करनी है. ये पूरा ज्ञान मैंने क्या दे दिया? एक सेंटेंस बना दिया पूरा. इतना टाइम नहीं मिलेगा जीडी में आपको. Nobody will let you speak for this long. They will cut you like this. They would say something जो offensive लगे वहीं काट देगा उसको. If say वो क्या बोलेगा? How should say it? Shahrukh Khan has done 10 movies. Shahrukh Khan has won 10 Oscars. अमिताभ बच्चन Millennium of the Star. अमिताभ बच्चन. ऐसे fact बोलोगे ना तो अगले को सुनना पड़ता है. And we are speaking sensible things in the chaos. Those who do generic things, okay, I don't become a traffic man. That I believe chest number 5 is what is right. Chest number 4 is right. Yes, Assam is great because they have IITs. We are increasing, so Assam is okay. Give up money मारना है. वो तो मुझे पता है फैक्ट एंड फिगर में असम के पास इस टाइम सबसे ज्यादा कॉमर्स असम में है. बट नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा निकाल रही है स्पोर्ट्समैन स्ट्रॉन्गेस्ट? तो मणिपुर ने बोला क्या अपने लिए? कोई सा मणिपुर? डिड यू स्पीक? नो. ऑब्जर्विंग. व्हाई? गेटिंग अ पॉइंट. हु इज फाइटिंग चाइनीज एवरी डे एंड एवरी अदर और डे? डिड दे से दिस थिंग? नो. राइट? सेम गोes on Meghalaya.
I believe in the whole Northeast, Meghalaya has the best roads, best road network qualities in Meghalaya. जो मैंने ऑब्जर्व किया है. Happily there. Did you speak on infrastructure? No. कोई बात नहीं, फैक्ट की बात नहीं कर रहे. Why? Because you're not seeking answer from inside. You're not collecting knowledge from outside. जब तक आप चीजें नहीं लाओगे, आप बोल नहीं पाओगे. It is not कि मैं पहले बोलूंगा फिर वो बोल, ऐसा नहीं होता. ये चलो अब नॉर्थ ईस्ट में है, अज्यूम कर लो ये क्वेश्चन हो जाए कि हु इज बेस्ट अमंग, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, आप 5 बैठे हो. वुड यू बिलीव कि वो नॉर्थ ईस्ट आपको बोलने देगा, या साउथ ईस्ट तंबी नहीं बोलेगा, आपको बोलने देगा? दे विल आर्ग्यू, दे मे रेज देयर वॉइस. वो तो नहीं करना है हमें किसी भी हालत, बट ये होगा ना, राइट? अभी देख लो थोड़ी देर में और बातें करता लड़ाई भी शुरू हो जाती है यहाँ पे. हाँ या ना? दिस इज रियलिटी. द टेस्ट ऑफ व्हाट? सबकॉन्शियस माइंड. पीपल फॉरगेट इन जीडी कि वो टेस्ट आपके नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आपका आपके द एबिलिटी टू रीजनिंग चेक कर रहे हैं. योर हाउ यू बिहेव इन ग्रुप चेक हो रहा है, और मैं वो चेक कर रहा हूँ कि कौन गिव अप मार रहा है, कौन फैक्ट बात कर रहा है, कौन फालतू में अपने आप को इम्पोज कर रहा है. लाइक हाउ डू यू नो दिस थिंग? somebody says क्या मणिपुर डिड $20 billion of business this year, Assam did 19. How do you know this year? ये किसने बताया? कहाँ पढ़ा तूने? ये आर्गुमेंट इज स्टूपिड आर्गुमेंट. यू डोंट नो. एक्चुअली उसको कोट कर रहा है, तो आप कोट करोगे नहीं भाई, वो उसका पूरे साल का है. और $19 billion असम का एक क्वार्टर का है, 3 months का है. पूरे साल कंपेयर करो, तब चलेगा पता. काउंटर विद फैक्ट्स एंड फिगर, वो नहीं हो रहा था. सिर्फ बोल देना नहीं है, क्या बोल रहे हो इंपॉर्टेंट है, और जो बोला उसके पहला वर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले बोलने वाला. गेटिंग अ पॉइंट, राइट? चिल, गुड फॉर यू. मेरा कंपटीशन कम हो गया. सिंपल एज दैट. अभी दे वोंट चेक आउट, दे नो कि ठीक है इसको एंगर इशू है. जब इसमें हाउ कैन आई गिव ए कमांड टू हिम? अगर ऐसा कुछ डिसीजन ले रहा है या अभी ही इज नॉट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में है ही नहीं, तो व्हाई वुड आई टेक हिम? आई एम फ्रॉम जम्मू. देयर कुड बी 100 रीजंस ऑन बेस ऑफ दैट जम्मू इज लैगिंग बिहाइंड. 100 reasons, thousands I would say. What do you think I would give up? Counter me right now. I won't give up. I will find figures and facts and figures. Right? तो वो तरीका है ना, लड़ने का मन तो बनाना पड़ेगा ना. यू नीड टू हैव विल टू फाइट. वो पहली चीज है. बॉक्सिंग में पावर टेक्निक बाद में, पहले विल है. अगर विल नहीं होगी तो वो लड़ोगे कैसे? गेटिंग अ पॉइंट. तो विल लानी जरूरी है. यू मस्ट, यू मस्ट. किसी ने फैक्ट बोला, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट ना, पर पहले अपनी बात रखो फिर एक्सेप्ट करो. आई शुड नो किसके मन में क्या चल रहा है, इसकी इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है. इसने बोला कि ऐसे एग्जाम दे रहे हैं कि भाई मणिपुर हैज गिवन डिंको सिंह, मणिपुर हैज गिवन मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड, यू नो, दिस थिंग, वर्ल्ड चैंपियन. एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना उसको, तो कोई नहीं है तो वो तो करना है उसको. नो यू कैन से कि एक्सेप्ट करो. हाँ अपनी बोलो. हमारी तो बॉक्सर है यहाँ की, बोर्गोइन, क्या नाम है उसका? यस, लवलिन बोर्गोइन इज फॉलोइंग द सेम फुटस्टेप्स. यस, मैरी कॉम इज आवर प्राइड, वर्ल्ड चैंपियन, बट शी इज द न्यू स्टार इन द राइजिंग, फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड. तो ऐसे भी उसको तो मैंने कम कर लिया, मैं कम नहीं हुआ ना. बिकॉज मैरी कॉम है, मेरी मैरी कॉम बन रही है. यू आल्सो हैव दिस थिंग समबडी. अपने आप को नीचे नहीं होने देना. एक्सेप्ट करो, बिल्कुल करो यार, फैक्ट तो फैक्ट है, करो, लेकिन अपनी बात रखनी ही है. राइट? उधर कैसे आता है कि चलो मैरी कॉम मान लिया. अब मान लो आई एम फ्रॉम से केरला, ठीक है, मैरी कॉम, बट यू नो हु फ्रॉम वेयर द आई एम फ्रॉम बैंगलोर एज ऑफ नाउ. यू नो सुनील छेत्री इज फ्रॉम विच प्लेस? ही इज लिविंग इन बैंगलोर, इन आवर प्लेस, इफ आई एम फ्रॉम कर्नाटका. तो ये हो गया. मतलब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे काउंटर कर रहा हूँ उसको. वो गलत, मेरी टोन गलत है, मेरा फैक्ट सही है. सुनील छेत्री फ्रॉम बैंगलोर, इंडियन कैप्टन, वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट गोल स्कोरर, सब कुछ है उसके पास. तो लेकिन उसके मैरीकॉम काउंटर करने के लिए मैं क्या कब कर रहा हूँ, और उसको मैं, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है. आई वांट टू बी एन ऑफिसर यार. आई शुड टॉक लाइक ऑफिसर, नॉट सम लोकल गड़ी का गुंडा टाइप. लोकल जब बात कर रहा है पेड़ के नीचे, अरे तुझे बड़ा पता. दिस नॉट द वे टू स्पीक. यस अज्यूम. तो वो बिहेवियर कहाँ से आएगा? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, उसमें बहुत कुछ है. 4 मैंने बताया ना आपको चीजें जो हैं, ये बिहेवियर चीजें हैं. दैट्स व्हाई ग्रुप डिस्कशन होती हैं. आई टेल द रीजन व्हाई आई डिडंट डू दैट.
कैसे नहीं है नॉलेज? मैंने क्या चीज बोली है? जेनरिक क्वेश्चन है। क्यों नहीं है? फर्स्ट थिंग, क्यों नहीं है? यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, यू डोंट नो द वेरी जेनरिक थिंग्स अबाउट योर कंट्री। ज्योग्राफी तो पता है ना, ये वो पढ़ी तो हुई 10th तक। तो ज्योग्राफी के लिए क्या न्यूज में तो आता ही रहता है कुछ ना कुछ, अच्छा बुरा सब आता है। आपने पढ़ाई नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फ्लो नहीं हो रहा इन्फॉर्मेशन का। आपको नहीं पता तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशन तो फ्लो कर रही है ना। हाउ वुड आई नो कि देयर इज आई एम इन शिलोंग न्यूज? आई एम आल्सो डन माय ग्रेजुएशन आई एम आल्सो। मुझे पता है आई एम शिलोंग में क्या पेपर पब्लिश हुआ, आई नो दैट आल्सो। और मैं रहा भी हूँ शिलोंग में, तो मैंने शिलोंग देखा भी है। ये तो अलग चीज होगी। नाउ इफ यू अज्यूम मी टॉक आस्किंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन सीरिया, राइट, रशिया यूक्रेन वॉर, आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है ना। बट इफ यू आर कमिंग फॉर डिफेंस समथिंग और वॉर का अपने को नहीं पता, आप कुछ नहीं पता उस चीज का, इट्स योर प्रॉब्लम। बट स्टिल यू नो, यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। लाइक जैसे दिस क्वेश्चन केम, आई deliberately put the word worst. I said the best way to put the other word is the worst. Worst का मतलब डिमीनिंग ही हुआ ना। बेस्ट अगर सबसे अच्छा तो वर्स्ट सबसे बुरा हुआ। None of you wanted to become a bad person. None of you wanted to become a black sheep. कि मैं कैसे बोलूं? I wanted somebody to become that, right? आप नहीं बोलना चाहते हो, बट स्टिल वांट टू से कि किसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में प्रोग्रेस सबसे कम हो पा रही है। हु इज द ब्लैक शिप इन नॉर्थ ईस्ट? कोई ऐसी जगह है जिसकी वजह से ब्लैक शिप मतलब किसकी वजह से प्रॉब्लम हो पा रही है? वी नीड टू, दैट प्लेस नीड टू क्लियर इट। अभी के लिए यू पॉइंटेड आउट 100 प्रॉब्लम मणिपुर इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम कहाँ इंसर्जेंसी ज्यादा हो रही है? कहाँ हो रही है? What is happening? Insurgency is happening at which place in northeast? Which is disturbing the peace in the region? Exactly. Start with that. The, start with this thing only. मैं worst word use ही मत करो. The imbalance in peace created in the because of the conflicts happening in Manipur has caused a bump to the development happening across the northeast. We have to go to Manipur and go beyond Myanmar because of this thing. It has got stalled and it has brought wrong. It has put north in wrong picture. तो आपने बोला नहीं कि वो वर्स्ट है, मैंने पॉइंट कर दिया कि भाई वहां पंगे हो रहे हैं इसलिए हो रहा है। मेघालय में कोई पंगे नहीं हो रहे हैं, असम में कोई पंगे नहीं हो रहे हैं, अरुणाचल में कोई पंगे नहीं हो रहे हैं, वहां से डेवलपमेंट रुक रही है। तो सटनली प्यार से आपने थप्पड़ मार भी दिया, बता दिया और पॉइंट रख दिया, राइट द वे। ओके, लास्ट थिंग, इंटरव्यू। जस्ट इंटरव्यू 1-to-1 होता है। वो एक रूम में यहाँ बैठे होंगे, ब्रिगेडियर साहब, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर, इफ गोइंग फॉर नेवी तो नेवी के एडमायरल, रियर एडमायरल को बैठे होंगे, एयरफोर्स के आपके मार्शल, एयर मार्शल रैंक ऑफ जनरल, ही विल सिटिंग हियर एंड विल मेड टू सिट अक्रॉस। इतना डिस्टेंस होगा, इतना मेरा इनका है, इतना होगा। यू विल कम इन फॉर्मल्स, यू मेड टू सिट, यू आस्क क्वेश्चंस, he will make you feel very comfortable. He will not be in uniform just like this, he will be in civil dress, ऐसे चेयर बैठे होंगे, he will talk to you, he will keep doing something, he will keep writing, कुछ खेलता रहेगा वो। he will make you feel कि भाई पहले तो आपसे आराम से बात करेगा, बिल्कुल आराम से, like you are from which place, say I am from say Bihar, or say where from Bihar, मतलब वो will find out। वो इतना कन्फेस करा देगा कि डू यू स्मोक, तो आप बोलोगे हाँ सर करता हूँ, इवेंचुअली कैप्स्टन पीता हूँ या गोल्ड फ्लैग पीता हूँ, अगर नहीं पीता हूँ तो नहीं पीता हूँ। ड्रिंक करते हो तो सर हाँ ये मेरे ब्लैक डॉग अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है। दे विल मेक यू दैट बी कंफर्टेबल एंड ट्रस्ट मी, फॉर लेडीज एंड बॉयज एवरीथिंग, इट इज ऑल साइकोलॉजिकल गेमिंग। इफ आई कैन मेक यू फाइट राइट नाउ, तो इमेजिन करो कि जब मैं क्वेश्चन पूछना हूँ तो मैं कैसे आपको क्या क्या निकलवा सकता हूँ आपके मन से, बिकॉज यू आर गोइंग विद प्री कंसीव्ड नोशन कि भाई इंटरव्यू होगा तो एक बैठे होंगे वहां में जनरल साहब और वो यू नो बिग माउथ स्टैच एंड हाई नोज पर्सनालिटी, oh you what do you think, glass it down there, तो मूवी में दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट, इट्स वेरी कैजुअल थिंग, वैसे वहां से बात करेंगे आपसे, तो बातों में जान लेंगे आप क्या हो। ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन ने पूछा, डाल रहा हूँ ना, अब 1-to-1 करूंगा तो और निकाल लूंगा। व्हाट इज द राइट थिंग? सिंपल, हाउ मेनी यू देयर? 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज, एक्स वाई जेड, सपोज दिस इज अ ग्रुप, राइट। अब सब आपस में परफॉर्मेंस दे रहे हो, जीटीओ में दे रहे हो परफॉर्मेस, स्नेक रेस वगैरह सब कर लिया, सब कुछ हो रहा है। अब आप इंटरव्यू देने आए हो, अब आए हो, चेस्ट नंबर इज 1 2 3 4, एज्यूम करो 12 तक चेस्ट नंबर है, एंड ओके बात करते करते ओके यार चेस्ट नंबर 1, हु यू थिंक विल मेक इट ऑफ ग्रुप, हु यू थिंक विल मेक इट, राइट। जैसे हम पूछते हैं कि ड्रीम 11 पे हु विल स्कोर 50 100 पॉइंट बना लो, हु विल स्कोर बेस्ट, वी कैन मेक आउट ना, सचिन विल प्ले वेल, द्राविड विल दिस, आप लोग बोलते हैं आज के टाइम में
न्यू स्टार्स हैं, मुंबई इंडियन विल विन, उसमें वो प्लेयर है. We don't talk about the team, we talk about the person. Similarly, if I ask you who will make it, SSB, like 1, 2, 3, 4, what will your answer be? What would your answer be? Like this, you have seen yourselves, right? Over here. Now, if I ask you who will make it, SSB, me, okay? I'm okay. Me. Anybody else? Me. Me. You and her. Okay. You too. Okay. Who will make it in SSB? कौन clear कर लेगा SSB आप में से? If I ask you in interview 1 to 1, 1 you 1 2, you will make it. None of you said all of us. Me. टीम बनाई थी ना आपने अभी? टास्क सारे किए थे ना साथ में? स्नेक रेस की थी ना अभी? खत्म. मैंने अभी पूछा ना मैंने कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू विल मेक इट टू एसएसबी? नहीं मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू. मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना. मेरा सवाल तो वही था, हाउ मेनी ऑफ यू विल मेक इट? हाँ इस ग्रुप में मैंने बोला 6 5 गर्ल्स 6 गर्ल्स 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, हु विल मेक इट? मैंने ये पूछा था ना. मैं ड्यूड अभी भी आप समझ नहीं पा रहे. एसएसबी इज व्हाट ऑप्शनल लाइक क्वालिटीज. आपको टीम में विश्वास नहीं है. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो क्लियर नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा? व्हाट मेक्स यू थिंक सो? प्लीज. व्हाट मेक्स यू थिंक कि ये क्लियर नहीं करेगी, इसकी ये नहीं करेगी या वो नहीं करेगा? आपको तो अपने अलावा कोई दूसरा भी नहीं दिख रहा है. मैंने तो सवाल ठीक है, इट्स योर आंसर. आई एम नॉट सेइंग योर आंसर रॉन्ग और समथिंग. यू सेड योर आंसर. ओके सर, आई विल मेक इट. राइट. ओके अदर देन यू, देन मैंने ये बोला ना एक बार भी. मैंने कहा बोला अच्छा बुरा? मैंने तो ये बोला कि यू हैव टू पॉइंट आउट द फैक्ट एंड फिगर. आपने अभी बोल लिया कि मैं चलो मैं ठीक है मान लिया मैंने. अदर देन यू, फिर तो आप पॉइंट कर गए. ये मैं बार बार बोलूं कि मैं इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, हु विल मेक इट इन योर ग्रुप? ये तो आप बोलोगे ना. मैंने वही तो पूछ रहा हूँ डूड कि भाई आपके ग्रुप में से कौन करेगा? आप तब क्यों नहीं बोलते सब कर सकते हैं सर? आपने तब अपना ही क्यों आगे ला पाया? When you don't know, then how can you say they cannot make it? Point stands there only. If you don't know this thing, who can make it? Then why could you say कि वो नहीं कर सकता? इसका मतलब वही हुआ ना कि मेरा सवाल फिर सुन लो. Simplest of English. Who do you think will make it? आपने आंसर दिया me. तो मैंने पूछा बता who do you think will make it? ग्रुप में बताया ना मैंने 5 लड़कियां 6 लड़के यही ग्रुप है, कितने करेंगे? आपने बोला मी. एक ने मी, सारे मी शुरू हो गए. All of us. So this is with जब उसने पूछा यही कि मैं कहा सर वो है सब अच्छे हैं, एवरीबॉडी परफॉर्म वेल, वी आर डूइंग गुड, वी आर टीम. हम टीम है तो मेरी टीम में भाई अब सारे तो विराट कोहली नहीं होंगे ना. नहीं होना पड़ेगा डूड, वही मैं कह रहा हूँ. ये आपके अंदर होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड. अगर आप दूसरों को बिलीव करोगे. यू रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी थी कि सपोज यू आर नॉट वीकर देन मी, यू आर थिनर देन मी. डिड आई रिमेंबर दिस थिंग? डिड आई से हिम इज वीकर देन मी? मैंने नहीं माना, मैं अभी भी नहीं मान रहा मुझसे वीक है. फिजिकलिटी में मान सकते हैं बट आई डोंट नो हिज मेंटल एबिलिटी. ही may rise again and again, I may give up. Getting a point? Because I've seen life na. It's not the dog in the fight, it's the fight in the dog which matters. Getting a point? तो ये मैं मानूंगा नहीं, मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ ऐसा किसी को कि ये कमजोर है. मैं ये पतला है, कमजोर नहीं है. ये अगर आपके मन में नहीं है थॉट, डोंट बिलीव दिस थिंग. तो कैसे होगा? अगर अगर आप सोचो, अगर ऐसे मैं सोचने लगूं तो मतलब बोल दूंगा यार ये पास होगा, इसको रख लो बाकी छोड़ दो. I never say this thing. Those two girls have not uttered a single word. They are dead hungry as of now. They are waiting कि अब मौका मिले हम जाएं बाहर, खाना भूख लगी है. All of you, I would say, right? But I'm just assuming, बेटा, just don't take it to heart. ना, just saying this thing. But I know this thing कि भाई अंदर से इसके subconscious mind. I told you, this subconscious mind. ये मैं गलती कर चुका हूँ लाइफ में. When I went from first SSB, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था.
मैंने ऐसे ही बोला था कि कौन कर सकता है, मैं टेस्ट नंबर 3 and 7 बिकॉज दे वर गुड स्ट्रॉन्ग टाइप ना, बाकी मैंने नहीं लिया। जब मेरा नहीं हुआ, मैंने आफ्टर ऑल व्हेन आई मेट सम अदर पीपल, सम साइकोलॉजिस्ट, सम पीपल फ्रॉम हु आई लर्न, दे मेड मी थिंक कि व्हाट मेक्स यू थिंक यू नहीं कर सकता है, तूने देखा क्या उसको, हु आर यू टू जज, सिंपल, हु आर यू टू जज, तू स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो बेवकूफ हो गया, होता ना यार, उसको दे दिया नंबर, वो कैसे हो गया यार, वो हम करते हैं ये, कर रहे हो यार, अपना देखो यार, मेरे से नहीं हुआ ना, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसे फोकस करो, वो हुआ नहीं हुआ मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे, ये मेरा पॉइंट है। ना कितनी सिंपल सी लाइन है। एक टाइम लगा रहे सर आपने ऐसा पूछा, आप अभी पॉइंट नहीं समझ रहे हो, आप क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो, आप अपने गलती नहीं मान रहे हो कि मैं थोड़ा सा एक वो आई वुड से हाई हेडेड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मानोगे नहीं उस चीज को। तो सर मैं अपनी बात दूसरे अभी अभी बोल रहा है, प्लीज दूसरे क्यों करूं, बोल रहे हो ना, आओ क्यों लगता है दूसरा नहीं कर सकता, दिस इज आई एम सेइंग, दिस इज ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, जब तक ये नहीं होगा नहीं हो पाता, दे चेक यू लाइक दिस इज द होल क्रक्स। थोड़ा दिमाग घुमा आज। तो ऐसे होता है चीज को लेके, एंड गेट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग स्पेशली टू गर्ल्स। ये मत सोचना कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, बोलो जरूर, आप बोला है इसने उसको आंसर दिया है, नाउ शी वुड हैव लर्न नंबर ऑफ थिंग्स, यार यहाँ ये थॉट प्रोसेस मेरा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पानी को देख के वाटर स्पून डाल लेते हैं, बोला तो मुझे चलो ना पता आप क्या सोच रहे हो, इसको अगर आप बोलोगे नहीं, आई कैन से व्हाट यू आर इन योर माइंड, आई कैन राइट 1000 words 1000 sentences, यू कैन क्रैम ऑल ऑफ देम, शायद 60 वर्ड्स आएंगे, हो सकता है 20-30 वर्ड रिपीट भी हो जाए, 10-15 वर्ड ऐसे होंगे वो पहचान लेगा कि ये हो आप यहाँ अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के कर रहे हो तो इमेजिन करो पूरे इंडिया में देहरादून, नासिक, दिल्ली, चंडीगढ़, गॉड नोज कितने इंस्टीट्यूट्स हैं और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना रट रट के पढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं क्लियर करते हैं, वाई इट कि 150 में से 5-6 बच्चे ही हो पाते हैं, क्यों अभी 150 बाहर जाते हैं, एक भी सेलेक्ट नहीं होता, वो क्यों, प्लीज कम, वाई इट सो, बिकॉज जस्ट दिस ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इसकी कोई बुक कोई मेथड नहीं है, राइट, टू थिंग रिमेंबर वेरी वेरी स्ट्रांगली, फर्स्ट थिंग, if somebody comes who has not cleared SSB, मिलते हैं ना हम ऐसे, confidence out, confidence out, whatever they say do not listen to it, do not believe it, they don't know why they got rejected, I 100% vouch for it, तो dangerous है, उससे ज्यादा dangerous वो लोग हैं those who have made it, जो कर चुके हैं clear और about to join academy है, because whatever they say become gospel's word for you, वो उससे ज्यादा dangerous हैं, उनको भी नहीं मालूम है सेट क्यों हुए हैं वो, exactly, good point, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरी बात नहीं मानो, राइट, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको सोचो, थिंक अबाउट इट कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, नॉट टेकिंग दैट रेफरेंस, आई हैव प्लेड एसएसबी थ्राइस, टॉप्ड इंडिया ट्वाइस, वन टाइम आई केम सेकंड, उसके मैंने लगातार भरे मैंने दिए, तो जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था मैंने कॉन्फिडेंस आउट हो गया, सो कॉल्ड भोपाल एसएसबी व्हिच इज इजी एसएसबी, मैं वहां गया, मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया, मेरे पाँव से जमीन निकल गई, आई कुडंट बिलीव कि मैं नहीं कर पाया, कैसे नहीं कर पाया, वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट टाइम, नहीं हो पाया, वापस आया बहुत, और तब मुझे गुस्सा आया एक टाइम के बाद, पहले तो बहुत ये हुआ कि है ना फ्रस्ट्रेशन, फिर गुस्सा आने लगा कि साला वो कैसे हो गया यार, वो तो इंटरव्यू टास्क में गिर गया था, वो तो बोल नहीं पाया था, मेरा क्यों हो सकता, तो फिर मैं अब, लेकिन मैंने उसको चैलेंज किया, मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ यार क्या चाहिए मैं करूंगा, आई फाउंड पीपल हु टॉट मी मेड मी डू दिस, आई नेवर डिड एनी प्रैक्टिस, यू रिमेंबर ये वर्ड मैंने कभी ना ऐसे याद नहीं किया है, बिकॉज द पर्सन माय he was Colonel KD Segan, he is no more, he was an old man, he himself was psychologist, उनकी ट्रेनिंग थी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन के पीछे पूछना क्या चाहता है, व्हाट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो 15 क्वालिटी जो हैं क्या क्वेश्चन के पीछे निकल के आ रहा है, आपको क्या उस हिसाब से आप आंसर दे पाओगे ना, इफ यू नो कि मैं पूछने का मतलब क्या है जानने का, अगर आपको नहीं मालूम तो कुछ ही बोल दोगे, आपको मालूम है ये जाने की कोशिश कर रहा है, ये आंसर होना चाहिए इसका, आप दे दोगे, और दे भी तब ही पाओगे अगर आपके अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होंगी, you can become a research fellow in IIT and IIM and ISC and XYZ, doesn't mean कि आप जाके अफसर बन जाओगे, अलग चीजें हैं दोनों, वो ट्रेनिंग लेना वो चीज जरूरी है, और जब मैं अपनी एसएसबी देने गया फिर आईएसबी, अब मैं पूरी तैयारी के साथ गया हूँ, वो मतलब सब कुछ ट्रेन जो कर करके गया हूँ मैं वहां पहुंचा हूँ एसएसबी सेंटर में, इलाहाबाद, सपोज टू बी द टफेस्ट वन, ऐसा कुछ नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पहुंचा हूँ, स्क्रीनिंग हुई, स्टोरी सुना दी, एज पर मी स्टोरी वाज गुड, आई शुड हैव मेड इट,
चोरी सुनाई, बाहर खड़ा करते हैं फिर से। देन दे से कि द चेस्ट नंबर व्हिच दे टेक आर सिलेक्टेड, व्हिच दे डोंट टेक आर आउट। ऐसा ही होता है। और दैट टाइम कर्नल साहब was said, he said this thing कि the name I'm taking are random, right? Once I'm done, then only the people whose name is not there are not selected. I was chest number 5 or something. My name starts with A, Akshay. So chest number, he said chest number 1, I'm 5. Chest number 3, chest number 7 and on. मेरा नंबर नहीं आया। तो अब इमेजिन करो, मैं इतनी तैयारी के साथ गया हूँ, इतना साइकोलॉजिकली होके गया हूँ कि वहां पहुंचा, मेरा नाम ही नहीं आया, मैं खड़ा रहा। मैं अब मेरे पास लाइफ में कुछ था ही नहीं। मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, अब तो आई एम डन। अब मैं इट नॉट नथिंग इन मी, मैं खड़ा हो रहा है ऐसे, चला गया। फिर अब मैं जब सब डिस्पर्स होंगे तब जाएंगे, हम खड़ा हूँ तो ऐसे खड़े हैं, ऐसे मोरल डाउन हो रखा था ऐसे करके। कितना नहीं केम बैक, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 6 एंड मैं 5 था। वेट अ मिनट, नंबर 2 तो नहीं हुआ था ना, नंबर 2 तो नहीं था, नंबर 3 था, ये तो था, ये कैसे आया? फिर मैंने ऐसे दिमाग लगाया ना कैसे, फिर मैं हाँ ऐसे ऐसे देन स्टार्टेड कमिंग बैक, ऐसे ही बोला था। अब आया चेस्ट नंबर 5। ट्रस्ट मी दैट द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, जब मैं पूरी ड्रिल में खड़े हैं और मैं यूं खड़ा होकर यस बोलता हूँ जोर से, आई शाउटेड, आई लिटरली शाउटेड लाइक एनीथिंग। मतलब जैसे मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। जस्ट किडिंग में इन हुआ हूँ, बिकॉज मेरा बिलीफ पूरा वापस आ गया। ये मैं सोच रहा था बिल्कुल सही था। उसके बाद 4 दिन टेस्ट चले, तो 4 दिन करता रहा चुपचाप से। एंड देन जब एसएसबी रिजल्ट आया, आई वाज फर्स्ट इन द मेरिट ऑल इंडिया। जस्ट बिकॉज जो एसएसबी आपका रिजेक्ट हो चुका है कॉन्फ्रेंस आउट, अपने नेक्स्ट एसएसबी में ऑल इंडिया रैंक 1 है। व्हाई? बिकॉज आई प्रिपेयर्ड दिस थिंग। और उसी के 2 महीने बाद मेरी एक और एसएसबी आ गई। आई एम इंजीनियर बेसिकली। मैंने वो देने गया, सेम हुआ, मैंने सेम किया, उसमें भी मैं नंबर 1 था, ऑल इंडिया रैंक 1। तो मेरे जो सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इससे मेरा फर्म बिलीफ हो चुका है, दिस इज द राइट वे टू डू इट। So I'm the same guy who have failed and then did it. Not कि I came, I saw, I won. ऐसा नहीं था मेरे साथ। थर्ड टाइम भी एसएसबी दी मैंने, वो भी क्लियर कर दी। दैट टाइम आई केम सेकंड, रिलैक्स होके गया था। दिस आई एम सेइंग, आप खुद देख लो, मेरे किसी भी चीज मैंने लिखा कितना है। I'm just I'm not making cram things कि इसका इमोशन पॉजिटिव पॉजिटिव, just things. It's just a holistic view. हर टेस्ट का क्या पैटर्न है, that's a different game altogether. Once you prepare for that, you come to them, I will certainly help you out in that, right? And yes, if you go back कि इस ऐसा होता है ना कि यार इस इंस्टीट्यूट में इतने बच्चों ने एसएसबी क्लियर किया है, फोटो लगा देते हैं करके, वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं। एक ही फोटो 36 जगह लगा होता है, राइट? So don't go by that thing. It's more of introspection. Look inside. Simple यार, you have to be physically fit. That's it. Nothing much. अगर आपका आई सेट प्लस माइनस 3.5 होता है, मेरा शुरू से ही ये लगा हुआ है यार, ठीक है, डजंट मैटर, प्लस माइनस 3.5 होता है, मेडिकली बायोलॉजिकली फिट, दैट्स इट। अगर किसी का सर्जरी छोटा मोटा हुआ तो उसको भी एक टाइम हो चुका है, फिट है तो फिट है, कोई इशू नहीं है उसको। कलर ब्लाइंड, वन शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, दैट इज देयर, बाकी कोई इशू नहीं है। एयरफोर्स का आई डोंट रिमेंबर, आई गेस उसका प्लस माइनस 2.5 होता है, बिकॉज़ एयरफोर्स एयरोबॉडी डजंट बिकम पायलट, ग्राउंड ड्यूटी बहुत कुछ होता है उसका, तो उसका अलग होता है, तो कम रिलैक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस, वांट टू आस्क, वांट टू नो, और मोर स्टडी एंड more confusion and all that? Did you guys understand something about SSB? Yes, Vikram, you're right. Reason is for everybody is different. Section is always not the same for everyone. Fine, right? So, G2 is the easiest thing in the whole wide world. Do and become officer. If I tell you this thing, na, GTO is just like, you know what? It's just like, okay. So you suppose you have to travel distance of this much long, और आपको 2 लकड़ी के पीस दे दूं मैं, आप तो यू आर मोस्टली नॉर्थ ईस्ट यार, your talent is survival talents all in built in you. 2 लकड़ी है, डिस्टेंस क्रॉस करना है, एक नहीं कर सकती, 2 कर सकती, तो ब्रिज कैसे बनेगा? इसके ऊपर ये आएगा ना, एक यहाँ से आएगा, जहां से आप जा रहे हो वो ऊपर आएगा, इस तरह से आएगा। दैट आई कैन टेल यू, वो कुछ भी नहीं है, सारी लड़ाई साइकोलॉजी से है। वन लास्ट थिंग आई टेल यू, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए, कि जब आपके टेस्ट होते हैं ना सारे, मार्किंग कैसे होती है?
It's a matter of 900 marks. How many marks you need to pass it? ऐसे भी मार्किंग करते हैं वो. How many marks do you think you need to clear it? Total mark कितने? जैसे मान लो 300 marks are with interview. ठीक है? 300 are with say psychological and 300 are with GTO. Total कितने हो गए? How many marks do you think you need to pass it? जो SSB clear करते हैं, तो कितने marks होने चाहिए? Out of 900 कितने marks आपके होंगे तो आपका clear हो जाएगा SSB? 900 में से पूरा इसका 30% कितना होता है? आपको बेसिक एग्जाम पास करते हो, हाउ मच मार्क्स यू नीड टू क्लियर वन एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम एनी? 30%, 35%, 33%. इसमें कितना चाहिए होगा फिर? ये तो यार एसएसबी है. आउट ऑफ 150 10 मेक्स एंड आउट 900 मार्क्स पास होंगे तो फिर फेल होने कितना चाहिए? 899, 270. कैसे? मेक ए गेस. 600 is right. You need only 90 out of 300. टोटल 270. कितना परसेंट हुआ ये इसका? नॉट इवन 30%. आइडियली 30%, एग्जैक्टली 30%. जिसके पास 270 मार्क्स होते हैं, 90 90 90 फ्रॉम ईच interviewer, psychological test and GTO is passed. This is easy to take. Relatively, this is easy to take. This is the game. This guy sees you, talks to you, interviews you. This guy makes you do number of things. You do number of things in front of him. He can judge you. This guy never sees you. Psychologist never sees you. He never meets you. आपके आंसर शीट जाती हैं उसके पास, जो आप लिखते हो ना अपने WAT, वो पढ़ के आपको पिक्चर बना के आपको मार्क्स देता है. वो आपको रिज्यूम करता है कि आप क्या हो. इमेजिन दिस जेंटलमैन, ही इज द ब्लैक शीप. इसलिए सारा फोकस इस पे है. सबसे टफ कह लो और आई वुड से सबसे काम इस पे. तो इस पे काम कर लेते हैं, उसका ये आसान हो जाता है. ये तो कुछ नहीं लगता फिर. इफ यू कैन मेक आउट कि मेरे क्वेश्चन के पीछे का क्या जानना चाहता हूँ. जैसे मैंने डार्क लिखा था, अंधेरा. आपको पता अंधेरे क्या जानने की कोशिश कर रहा है, तो वो आंसर मैं से बना रहा हूँ. तो दिस गाइस गेटिंग ओके. अब वही मुझे कोई वर्बली पूछ ही लेगा, फिर तो मेरे लिए आसान है ना बताना. सारी लड़ाई यहाँ पे है. इफ यू कैन इम्प्रेस दिस गाय, यू आर डन. फन फैक्ट, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस हॉल. दिस इज यू, दिस इज एंट्रेंस. आप ऐसे आओगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठे हैं साइकोलॉजिस्ट, यहाँ बैठे हैं इंटरव्यू, यहाँ बैठे हैं GTO. नंबर ऑफ GTOs आर देयर जो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का कर रहे होते हैं. इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक पैनल होता है, कमांडेंट एंड ऑल दोस. सिमिलर साइकोलॉजी 2-3 होते हैं. एक तो सबके चेक नहीं कर सकता ना. ओनली ऑन कॉन्फ्रेंस डे दे ऑल मीट. कैन यू बिलीव दिस? एंड डिस्कस यू. That day before you come in, test number 1, 90, 90, 89. क्यों? करेज फैक्टर. ओके, दो पास कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि थोड़ा कम है इसमें. दे विल आस्क यू फ्यू थिंग. जेनरिक क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमसे सवाल पूछा. यू कम इन, सेज कि हाउ वाज योर स्टे? गुड, कंफर्टेबल, ओके. एनी सजेशन? नथिंग, ओके, यू कैन लीव. उसने पूछा, आगे. इधर यू आर इन, यू आर आउट. सिंपल. जब वो कॉन्फ्रेंस डे वाले दिन आप आए, आप बैठे, हाउ वाज योर स्टे? गुड. उसका पूछा, यार टेल मी व्हाट इफ व्हाट. अब उससे कुछ पूछ लिया ना, यू आर बॉर्डर केस. बॉर्डर केस. बॉर्डर केस मतलब आप इधर भी सकते हो, उधर भी सकते हो, क्योंकि कोई दो आपको पास कर रहे हैं, एक आपको फेल कर रहा है. किसी में बोला कि सर इसमें करेज कम है, या इसमें इनिशिएटिव नहीं है, राइट, या इसमें डिटर्मिनेशन नहीं है, ये फैक्टर कम है इसका, तो सवाल भी ऐसे पूछा जाएगा. नो नो डूड, कॉन्फ्रेंस लास्ट डे, 5th डे, सब हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, रिजल्ट रेडी हो चुका है. अब आज आज मैं इंटरव्यू ऑफिसर कमांडेंट साहब, साइकोलॉजिस्ट टीम जो सेंटर टेस्ट चेक किए हैं, और GTO आज ही डिस्कस करेंगे, मिलेंगे आपस में और एक दूसरे से मार्क्स पूछेंगे. ऐसे बात. टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 1, ओके, आई से 90, टिक, 90 90 डन. इज ओके. कितने डिटेल है, जरूरत नहीं बात करने की, बिकॉज 100 स्टूडेंट्स होंगे, वो आएंगे, बैठेंगे, एनीथिंग ऑन स्ट्रेट.
always take good, okay, जाओ, so you are done. भाई 85, 85, 80, pass, fail है ये, is not selected. Anything want to say? Nothing. Any suggestion? Nothing. Okay, go. You're out. Now somebody comes again 90, 90, 89. क्या reason? Courage. Okay. आ गया. अब courage चेक होगा उसका एक सवाल, छोटे सवाल में. अब courage मतलब लड़ाई नहीं का, बस वो पूछेगा क्या, you are from which place? अरुणाचल. Okay. Yeah, you are okay. How is stay good? Okay. What happens? Yeah, if you go out from this place now after SSB going, and your mobile breaks and your purse is stolen, how to reach home? How you reach home? थोड़ा डरा दिया, है ना? अब उसका रिएक्शन आप क्या दे रहे हो? अगर आपके अंदर करेज फैक्टर है, तो उसे नंबर ऑफ थिंग्स यार. फोन टूटा है, नंबर थोड़ी खराब हुआ मेरा. आई विल कॉल समबडी. भाई आई विल कॉल समबडी, प्लीज सेंड दिस मनी टू दिस पर्सन ओवर हियर इन दिस शॉप और ब्ला ब्ला ब्ला. आई विल टेक कैश फ्रॉम हिम. द नंबर ऑफ वेज टू डू इट. कोई डर जाए, मैं कैसे जाऊंगा घर, पैसे चोरी हो गए, मुझे बचा ही नहीं है. ये क्रिएट अ सीन ना. तो आप डर गए, तो हाँ भाई इसका करेज सच में कम है. ओके, थैंक यू, गो. ओ फेल. इस तरह से सवाल, एक छोटा सवाल होगा, बहुत बेसिक सवाल हो सकता है, राइट? या किसी को यही बोल दिया कि ईगोइस्टिक है ज्यादा, वही सवाल फिर से आ गया, उसने वो नहीं पूछा, पूछ लीजिए यार, हु डू यू थिंक आउट ऑफ दिस 50 विल मेक इट? अपना ग्रुप तो था ही था, और भी डाल दिया, उसने वहां नहीं पूछा. आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम गिविंग अ वेरी वेग हाइपोथेटिकल. सर, अब अपने ग्रुप का पता है, वो कुछ पहले ही बन जाते हैं. नॉर्थ ईस्ट टाइप्स बन गए, एक तरफ हो गए, हम भी एक तरफ हो गए, है ना, राजस्थान एक तरफ चले गए, बन जाते हैं इवेंचुअली. ऑब्वियसली बात है, अपने गांव का मिल गया कोई. सर आई गेस ही विल मेक इट. एंड मे बी समबडी फ्रॉम से केरला वाज बिकम गुड फ्रेंड ऑफ यू, सर ही विल आल्सो मेक इट. आपने 4 पर नाम ले लिया, ओके. वो पूछेगा नहीं व्हाट अबाउट अदर्स, 4 5 कहते ओके आई थिंक, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, अगर बोला सर आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो, वो तो अभी हमें पता ही, आई डोंट नो, यू डोंट नो, तभी तो पूछा आपसे सवाल ऐसा. लेकिन आपने किसी को यही नहीं बोला कि सर ऑल ऑफ देम मेड. इफ यू डोंट नो देन डोंट गो नेगेटिव, गो पॉजिटिव. व्हाई गोइंग नेगेटिव? जीरो केस होता है, तो लड़ाई यहाँ होती है लास्ट. If you are not asked a question on the D day, you are either in or you are out. If you ask something, this preparation of SSB, as per my belief, is learning the art of knowing the intention behind the question. If you can work upon it and make it out, you can give the answer. You can prepare. If you're not done this, तो हमेशा confused ही रहोगे. उसका आंसर पहले क्वेश्चन के आंसर में है. Why you want to join army? उसी के आंसर सारे आंसर है. अगर आपके अंदर वो चीज नहीं पता मुझे आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है, तो बाकी का आंसर कैसे निकालोगे आप? आप कैसे क्रिएट कर पाओगे वो पिक्चर, वो पर्सनैलिटी जो आप अपने आप को देखते हो? None of the person who is made to army, air force, navy has not assumed himself wearing the uniform when he was not wearing the uniform. ऐसा नहीं हुआ कभी भी, मैं भी नहीं था ऐसा. I have to believe कि मैं हूँ वो. Once you go there, just go with mindset कि मैं ऑफिसर हूँ, यहाँ बैठा हूँ as a junior officer in front of senior officer, and my answer would be an answer which an officer would give him. If I'm given a challenge, a question is a challenge to me, I will answer it the way an Indian army officer representing this bloody country to the world will answer. जब आपका आंसर वैसे होगा, बिलीव करोगे कि मेरी ही जगह है. आई एम नॉट ए एस्पिरेंट, आई एम द ब्लडी ऑफिसर सिटिंग विदाउट यूनिफॉर्म. ये बिलीफ अंदर नहीं होगा आपके, आप नहीं दिखेगा उसको वो. यू टू मेक हिम फील कि मैं ये हूं. यू वो उसको दिखेगा ये दिस गाय हैज इट. अगर डार्क देख के डार्कनेस दिख रही है, लाइट दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रही है, और किसी को अटैक दिख रहा है, तो वो अटैक वाला बंदा सही है मेरे को. ये मेरा आंसर है डार्कनेस वाला. बेस्ट टाइम टू अटैक. जब दिखेगा तो लिखोगे ना. वेपन क्या लिखोगे? किल एनिमीज. वो तो बिना वेपन ही, वो फिर अटैक नहीं करोगे. वेपन ही किल नहीं करोगे एनिमी को. योर बॉडी इज अ वेपन, रेस्ट आर एक्सेसरीज, राइट? वेपन बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ सोल्जर. डिफीट, वर्ड ही डिफीट है. नाउ स्पीक. ये वर्ड आ चुके हैं मेरे पास. हाँ, ऑलवेज ज्ञान, महाज्ञान. He said, don't feel bad. Now you're speaking now, so I'm changing my gear now, right?
that defies me. Okay, bolo bolo bolo. Before you go for, instead of lunch, now it's time for evening snacks. Bolo. Defeat, हार. हाँ. Let be the last word. Anybody want to make any stand? Yeah, any online मैंने देखा नहीं confidence. Everybody need to the okay. Defeat word का answer anybody from the online please give before write and then sign off. There is my mentality. ये मेरा answer ये था. ये word आया था. ये word आया था. मुझे याद है ये word अच्छे से क्योंकि इसका answer जब उसी टाइम मेरे मन में निकला था. Enemy at any cost. Okay. हाँ. Has to be defeated. If I, okay. That's it. Mahagyan. Good. You tried good. Shabash. ये मेरा आंसर था. This has arrogance, this has confidence, this has belief, and this has attitude. है या नहीं है? You guys can feel it. ये टाइम कितना मिलता है लिखने के लिए? 15 seconds. तो क्या अगर आपके अंदर वो चीज नहीं होगी क्या लिख पाओगे? I'm not saying dude कि मैंने बड़ा अच्छा किया लाइफ में. No, please don't believe in that. I'm not going to portray this thing. My point is कि अगर मेंटालिटी में वो चीज जब तक घुसेगी नहीं, वहां निकलेगी नहीं. Defeat the enemies. वो सबको पता है. वो आप वो मालूम है ऐसा वर्ड कि आप क्या लिखने वाले हो. वो आप पहले बच्चे नहीं होंगे पास आए हो. Thousands come, thousand right. सब लिखते हैं. ज्ञान भी लिखते हैं. Defeat the odd things, blah blah blah. वो तो यार idiom, phrases, sayings, वो अपनी जगह है. Universal fact अपनी जगह है. But this is me. ये मैं हूँ. Right? This is me. उसको ये अब ये पढ़ेगा वो तो नहीं बोलेगा कि यार dude इसको please लो. I told him I believe that I am somebody who is Indian Army officer without uniform that time. My uniform is hanging across the line and I'm crossing it. I dare you if you can stop me. वो एटीट्यूड मन में लेके चलोगे तभी तो कोई तुमसे बड़ा ना तुमसे ज्यादा. It's just thinking I'm not the best, but I'm not anything less than the best. Among this class, we are all best. We are all good. If I'm Virat Kohli, I mean anybody Virat Kohli, तो मेरी टीम का जो कुलभूषण यादव जी बॉलर बराबर है भाई. उसका पूरा मेरा अपना रोल है. Getting a point? वो belief रख के चलना है. We should have the panache, that arrogance, that belief, but at the same time, do not undermine somebody. Do not demean somebody. I am good because I am good. Okay, it's my duty to become good, to be the best in my views. But otherwise, not best. He's also good. उसका टाइम नहीं आया है वो हो भी अच्छा है. Then only I can make a team. अगर मैं ही मेरी टीम में हूँ, मेरे में सब कुछ है, क्या लीडर बनूंगा मैं, क्या ऑफिसर बनूंगा मैं, राइट? चलो, with this, I guess we have now fair idea about it. क्या है SSB का, what kind of mentality you should have it. Keep talking to yourself. Use dead words like chair, table, remote, AC. जो दिखता है उस पर word सोचो and think. जो word है उसको use मत करो अपने sentence में. Do not use the word in your sentence. जैसे enemy defeat था, मैंने defeat word use ही नहीं किया. Gift reserved for the enemies. Weapon, best friend of a soldier. War, ultimate test of a soldier. Something like that. War पे क्या आता है? We should not have war. We had 2 world wars, 3 world wars. War is not good for development. अरे यार मैं फौजी बनने आया हूँ दोस्त. You're gonna become the force of the country, not a philanthropist or economist. Speak, think like that. Getting a point? It's a very vast thing. We start picking it up, it becomes very easy. Right? Last time asking. Anybody any question? Chalo. As of now, we take pause now. We had a good class of almost 1 hour and 40 minutes. है ना? लंबा क्लास हो गया. ज़्यादा टाइम के बाद फिर बाउंस होता है.
है ना? चलो टेक केयर, बाय बाय। गुड, गुड आंसर, ओनली फॉर ओपोनेंट।